ओके अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम इंशाल्लाह CompTIA A+ ट्रेनिंग का चैप्टर नंबर 4 फिनिश करेंगे और टारगेट यही रहेगा कि हम बिटवीन 5 PM एंड 7 PM के टाइम के अंदर इसको ख़त्म करें। लास्ट जो हमने चैप्टर 3 कवर किया था, हाँ थोड़ा उसका मैं रिकैप करूँगा, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगेन ये ट्रेनिंग हम बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हो, एनी कंसर्न्स, एनी कमेंट्स, आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल में पेश करें, या तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं तो आप चैट में भी उसको टाइप करके सेंड कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस। जस्ट टू लेट यू नो, ये जो कोर्स है ऑफिशियली जो कॉलेज के अंदर ये लोग पढ़ाते हैं, मिडिलसेक्स कॉलेज यहाँ की कम्युनिटी कॉलेज है, सेम कोर्स जो हम अभी कर रहे हैं CompTIA ट्रेनिंग A+। हम नेटवर्किंग भी करेंगे और हम सिक्योरिटी भी करेंगे। एज यू कैन सी इट कॉस्ट अबाउट 3,995 विद द वाउचर, और विदाउट द वाउचर इज अबाउट $3,500। सेम थिंग, सिलेबस भी आप इनका देखेंगे, दे कवर एग्जैक्टली व्हाट वी आर कवरिंग। ओके, हार्डवेयर का सेक्शन है, फिर ये विंडोज का हम सेक्शन कवर करेंगे, हम नेटवर्किंग भी करेंगे, और फिर इन द एंड वी विल आल्सो डू सिक्योरिटी। बट ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। हमारा जो प्रैक्टिकल भी हम कवर करेंगे, और जैसे जैसे हम कोर्सेज कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिकल, शायद डिपेंडिंग ऑन टाइम लिमिट हम वो बीच बीच में हम लाने की कोशिश करेंगे। सो फॉर इंस्टेंस, अगर कोई नेटवर्क का कोई क्वेश्चन आया या नेटवर्क का कुछ शो करना पड़ा, सो आई विल स्टार्ट दैट इनटू ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज वेल। चलें ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 4 से, जो कि स्टार्ट होता है 371। जस्ट टू रिकैप रियल क्विक, लास्ट टाइम हमने केबल्स, VGA केबल्स के बारे में पढ़ा था। Let's just real quick go through that. जी, तो लास्ट टाइम हमने साउंड कार्ड्स के जो PC एक्सपेंशन कार्ड है उसके बारे में पढ़ा था, विच इंक्लूडेड ऑल दीज कैटेगरीज। जो मेन में है वो हमने कवर की थी, मोस्टली साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, USB कार्ड, एंड सम ऑफ द स्टोरेज कार्ड्स एंड मोडेम कार्ड्स। हमने ऑल्सो कवर किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ USB केबल। USB 1 is usually it's an outdated cable, तो हमने mostly 2 and 3 को कवर किया था। Firewire is not used as much, तो हमने इसको थोड़ा सा कवर किया था। SATA 1 versus 2 and SATA 3 and eSATA. SATA 1 does not get used anymore, so हमने SATA 2 and 3 and eSATA को कवर किया था। कुछ कंपोनेंट्स इसमें से भी कवर किए थे। RJ11 को हमने we did not go over RJ11 कनेक्टर because फैक्स मोडेम अब ऑल इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। हमने IR और ब्लूटूथ को एंड एक्चुअली रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी ऑल्सो कवर किया था, तो वी डिड दैट। मोस्ट ऑफ दीज जो है ये फॉलो अप होंगी इन चैप्टर नंबर 4। सेम विद द DVI, आप आगे जाके देखेंगे अलग अलग किस्म की DVI पोर्ट्स हम यूज करेंगे, और ये चैप्टर 4 के अंदर भी मैं थोड़ा सा आई पीक्ड इनटू इट एंड इट साउंड्स लाइक ये सब उसी के अंदर कवर हुआ है इन डिटेल। सेम गोज फॉर एवरीथिंग एल्स हियर। सो कीबोर्ड, माउस, हमने जो पेरिफेरल्स थे उसको भी हमने कवर किया था, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। सो लेट्स गो मूव ऑन टू द चैप्टर 4। जैसे ही हम उसमें जाएंगे यू विल लर्न मोर इन डिटेल अबाउट इट। एक्सक्यूज मी। तो चैप्टर 4 के अंदर हम आज कवर करेंगे बेसिकली different types of display devices, LCD, the types of technology behind these screens, TN and IPS, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। Fluorescent versus LED backlighting, ये पुराने CRT and LCDs also works off of that। Plasma technology के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
प्रोजेक्टर के बारे में, OLED technology, this is a new technology, this is a recent or the not a recent but it's an ongoing technology. I would say this is not a recent technology but it's an ongoing technology. This technology still exists. फिर हर टीवी के हर स्क्रीन के रिफ्रेश रेट और फ्रेम रेट्स के बारे में बात करेंगे, रेजोल्यूशन, नेटिव रेजोल्यूशन, उसकी ब्राइटनेस, एनालॉग वर्सेस डिजिटल, इसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा जी, ऑल्सो एस्पेक्ट रेशो, ये अलग अलग रेशो बेसिकली स्क्रीन साइज के हिसाब से मोस्टली इसमें भी चलते हैं, जब हम मूवी देखते हैं उसमें भी चलते हैं. सो आई विल कवर दैट लिटिल बिट. ठीक है, उसके बाद द प्राइमरी गेटिंग कंप्यूटर टू यूज. अच्छा जी, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जो लाइव वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप प्लीज उसको अबाउट अस के अंदर जाके आप उसका लिंक कॉपी करके आप देख सकते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ, जिनको नहीं मिला है मैं सेंड कर देता हूँ. चलिए, मैंने सेंड कर दिया है. ओके, तो द प्राइमरी मेथड ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट of a computer is to use a video unit. You know, कोई भी चीज़ हमें कंप्यूटर के अंदर देखनी हो, the output method जो है उसका mostly visually वो है display unit, which is also called VDU. Display unit जो है basically वो signal को convert करता है, signals को convert करता है text and pictures में, ताकि उसको टीवी के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर शो कर सके. और जो फर्स्ट कंप्यूटर जो यूज हुआ था वो टीवी के स्क्रीन से कनेक्ट हुआ था, यू नो, बिकॉज उनको दूसरी टेक्नोलॉजी बनानी नहीं थी, तो उन्होंने टीवी के स्क्रीन को यूज किया था. और इसी चैप्टर के अंदर हम वो भी इंक्लूड करेंगे, यू नो, पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में, इन लिटिल बिट मोर डिटेल ऑन वीजी एंड डिस्प्ले टाइप्स. चलें, अभी अंडरस्टैंडिंग डिस्प्ले टाइप्स एंड सेटिंग्स. So most display system works the same way. First, the computer sends a signal to a device called the video adapter, an expansion board installed in an expansion bus slot, or the equivalent circuitry integrated onto the motherboard. TV के अंदर जो है ना एक डिवाइस होता है, उसको they call it video adapter, और एक expansion board basically इंस्टॉल हुआ होता है. जो सर्किट, जो मदरबोर्ड हमने जो चैप्टर आई बिलीव फर्स्ट के अंदर जो पढ़ा था, मदरबोर्ड इज सिमिलर टू दैट बट लिटिल बिट स्मॉलर. उस मदरबोर्ड के ऊपर इंटीग्रेटेड उसको सोल्डर्ड किया हुआ होता है. ठीक है ना. नाउ ये जो टेलिंग इट टू डिस्प्ले अ पर्टिकुलर ग्राफिक और कैरेक्टर, वो जो सर्किटरी है, जो एक्सपेंशन स्लॉट है, बेसिकली टेल्स द पर्टिकुलर ग्राफिक और कैरेक्टर टू बी डिस्प्लेड on the TV. ठीक है. Now the adapter then renders the character of the display, that is, it converts the signal instruction into several instructions that tell the display device how to draw the graphic and sends the instructions to the display device based on the connection technology between the two. तो basically इसका काम ये है कि ये signal send करता है, उसको बताता है कि कैसे वो एक ग्राफिक ड्रॉ करने का और वो इंस्ट्रक्शंस कैसे डिवाइस के अंदर डिस्प्ले करने का. ये सारा काम जो करता है ये वीडियो अडेप्टर और एक्सपेंशन स्लॉट आगे उसको पुश करता है एंड इट शोज यू द पिक्चर्स. द प्राइमरी डिफरेंस आफ्टर दैट आर द टाइप ऑफ वीडियो अडेप्टर्स आर यूज्ड. सो बेसिकली हम, एज आई सेड, वी विल कवर लिटिल बिट मोर ऑन दिस टेक्नोलॉजी बिकॉज आई हैव सीन बोथ बीइंग यूज्ड इवन एज ऑफ टुडे, डिजिटल और एनालॉग. ठीक है ना. इन द टाइप ऑफ डिस्प्ले हम कवर ऑल्सो करेंगे LCD, प्लाज्मा एंड OLED. Now, video display types. To truly understand the video display arena, you must be introduced to few terms and concepts with which you may be unfamiliar for now. The legacy digital transistor logic (TTL) and the analog technologies that began with video graphics array, which is VGA, commonly known as that blue cable, were once the two broad categories of video technology.
ये बहुत कॉमन थी पहले. VGA is still common. These categories have nothing to do with the makeup of the video, but instead with how the graphic adapter communicates with the video. ठीक है ना? इसका बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये उसको डिस्प्ले तक उसका सिग्नल पहुंचाती कैसे है, वो कम्युनिकेट कैसे करती है ग्राफिक्स एडेप्टर से. ग्राफिक एडेप्टर वीडियो से कम्युनिकेट कैसे करता है, ये काम VGA और ये TTL का है. सही ना? And you will read more about it in the further down in the chapter, right? So we will explore these four technologies right now. The liquid crystal display, also known as LCD, ठीक है ना? Plasma TV के बारे में सबने सुना होगा. OLED, as I said, is a fairly new, still ongoing technology, but अभी आगे और technology आ चुकी है. And projection system, which is the projectors and things like that, anything to project on a bigger scale. अभी जो liquid crystal displays हैं, what's behind it, and how does it actually work? So we'll learn a little bit more about that here. So portable computers were originally designed to be compact versions of their bigger desktop cousins, as you know, for portable computers, which is like laptop. उसको डेस्कटॉप को ही बेसिकली इन्होंने कंप्रेस करके बनाया था. They crammed all of the components of the big desktop computers into a small suitcase-like box called laughably a portable computer. You could also hear the term luggable in those days. पुराने days के अंदर ये लोग बोलते थे luggable when referring to the same system. So no matter what the designers did to reduce the size of the computer, the display remained as large as those found on desktop versions. बहुत कोशिश की उन्होंने डेस्कटॉप के जो डिस्प्ले थे वो remained big. They were not able to reduce it until एक इन्वेंटर ने ये फाइंड किया कि when he passed an electrical current through a semi-crystalline liquid, the crystals aligned themselves with the current. जब उसने एक इन्वेंटर ने फाइंड किया कि भाई जब मैं इलेक्ट्रिकल करंट को when I pass it through a semi-crystalline liquid, जो कि लिक्विड क्रिस्टल के अंदर फॉर्म इधर से आई है, वो जो क्रिस्टल है ना वो खुद ही अलाइन होना शुरू हो जाते हैं. So he found that when transistors were combined with these crystal liquids, patterns could be formed. उसने देखा कि अगर मैं इसके अंदर ट्रांजिस्टर भी ऐड करता हूँ उसी सेमी क्रिस्टलाइन लिक्विड को, जब मैं इलेक्ट्रिकल करंट पास करता हूँ, if I add transistors in that also, he was able to create patterns out of that. ठीक है? Now these patterns could be combined to represent numbers or letters. The first application of these liquid crystal displays was the LCD watch. It was still big for that time. It was probably small, but if you were to आज के ज़माने में वो अगर आप LCD वॉच देखोगे तो आपको काफ़ी बड़ी लगेगी, पर उस ज़माने में काफ़ी कंप्रेस कर दी थी उन्होंने. पर जब उसने देखा कि मैं अगर ट्रांजिस्टर ऐड करता हूँ इसके अंदर तो मैं इसके पैटर्न्स को फॉर्म कर सकता हूँ, फिर उसने और देखा excuse me, as LCD elements got smaller, the detail of the patterns became greater, until one day someone thought to make a computer screen out of several of these elements. तब जाके किसी ने सोचा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, LCD के जो एलिमेंट्स थे और छोटे होना शुरू हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी. जब वो छोटे होना शुरू हो गए, देन उन्होंने सोचा कि maybe we can put this in a computer screen also. And this screen was very light compared to computer monitors of that day. उस ज़माने के अंदर वो CRT मॉनिटर होते थे जो about I would say 50 pounds या 30 pounds के होते थे, काफ़ी heavy होते थे वो compared to what it is today. लेकिन LCD जो है वो they were pretty light, बहुत हल्के थे, and they did not consume a lot of power. काफ़ी कम power भी consume करते थे. It could easily be added to a portable computer to reduce the weight by as much as 30 pounds. अगर वो portable computer में add करते हैं ये LCD screen, it reduced the weight to up to 30 pounds from back then, the desktops or the portable computers they had. Now, as the components got smaller, so did the computer, and the laptop computer was born. सब components आहिस्ता छोटे होना शुरू हुए.
उसकी वजह से टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व हुई, ये लैपटॉप बोर्न हुआ, लैपटॉप इजाद हुआ, राइट? So for years now, LCDs have not been limited to just laptops. Desktop versions of LCD displays and their offshoots are practically all that they are seen today. Additionally, the home television market has been enjoying the LCD as a competitor of plasma for years. LCDs used with desktop computer systems use the same technology as their laptop counterparts, but potentially on much larger scale. उन्होंने लैपटॉप्स इजाद कर दिए because technology allowed them to. काफ़ी चीज़ें छोटी हो गई, so they were able to create small छोटी छोटी स्क्रीन बनाना शुरू कर दी लैपटॉप के लिए. और ये सेम चीज़ें जो होम टेलीविजन के अंदर भी यूज़ हो रही हैं, आज भी हो रही है. LCD किसी किसी के घर में लगे होते हैं. और LCD इज़ अ डायरेक्ट कंपेटिटर ऑफ प्लाज्मा pretty much. हम आगे जाएंगे, हम प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके थोड़े डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे. बट LCD उन दिनों में बेसिकली प्लाज्मा का डायरेक्ट कंपेटिटर था. Now, these external LCDs are available with either analog or digital interface. ये थोड़ा समझने की बात है. I'm going to read this through and then I will explain you a little bit more in detail on this. The analog interface is commonly a VGA interface, but it can also be a DVI interface. अगर आपको याद हो, हमने VGA और DVI-A interface का chapter number 3 के अंदर हमने ऊपर पढ़ा था. Internal digital signals from the computer are rendered output as analog signals by the video card and sent along the cable, जो भी cable हो, that terminates on and supports the analog connector at each end. Basically, इसमें क्या है कि जो LCDs हैं, LCD TVs, I don't think इतने मार्केट में आ रहे हैं एनालॉग LCD TVs, but I have seen it at people's places, right? उसमें क्या होता है, LCD के अंदर जो बोर्ड लगे होते हैं, जो एक्सपेंशन स्लॉट्स जो लगी होती हैं, it has the ability to either do come with analog boards or digital. अब जो ट्रांसमिशन होती है between the TV to your DVR or between the TV to your satellite or cable DVR, whatever you have, वो जो cable है, if it's an analog, you would probably use a VGA cable. But if it's a digital cable, if it's a digital interface, then VGA cable is not going to work. You would either need DVI-A or HDMI. ठीक है? Usually in today's day and age, HDMI is used more than DVI-A, but you still have both options. Now, the analog signal is then converted back to a digital signal for process by the display device. So basically ये बोल रहा है कि जो इंटरनल जो डिजिटल सिग्नल्स जो है कंप्यूटर जो है वो रेंडर करता है, उसका जो आउटपुट जो है वो एनालॉग का होता है. बाय द वीडियो कार्ड जो है वो एनालॉग सेंड करता है, बट बाय द टाइम इट टर्मिनेट्स टू द अदर एंड. अगर आपका टीवी डिजिटल है, इट कन्वर्ट्स इट बैक टू डिजिटल. और इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जब एक टाइम आया था जब यूएस के अंदर आई बिलीव, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, बट इट वाज आई थिंक बिफोर 2005 और समथिंग, जो हम एंटेना लगाते थे टीवी से कनेक्ट करके, ठीक है, और हवा में जितने भी सिग्नल्स आते थे, एनालॉग सिग्नल्स, जो भी एनालॉग सिग्नल्स आते थे वो हवा में टीवी के एंटेना से पकड़ के हम टीवी के ऊपर फ्री चैनल्स देख सकते थे. फिर गवर्नमेंट ने पास किया कि एनालॉग इज गोना बी टर्मिनेटेड एंड ओनली डिजिटल सिग्नल्स आर गोना बी एयर्ड. तो उस दौरान जिन जिन लोगों के पास एनालॉग टीवीज थे, that included CRT, वो बल्कि बड़े बड़े टीवी, that also included LCD analog TV. जिन जिन के पास एनालॉग टीवी थे, if you remember, government had provided a little device. मैं आपको दिखाता हूँ. Government had provided a little device. It's called a digital converter or tuner. Let's look at the image. ये ऐसे है ना, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स दिए थे. आप इसको जरा बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. मैं इसको आपको और
एक्सप्लेन करूंगा. बेसिकली वो बॉक्स थे ना, ऐसे बॉक्सेस दिए थे, ऐसे बॉक्सेस दिए थे, एंड उसका बैक pretty much look like, no not like that, but उसके अंदर जो आप है अपना एनालॉग कनेक्शन डाल सकते थे. द होल पर्पस ऑफ दैट बॉक्स वाज कि जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सिग्नल चेंज कर दिए हैं, पर लोगों के पास जो एनालॉग टीवीज हैं, ये बॉक्स बेसिकली डिजिटल चैनल्स को कैप्चर करता है, उसको लेता है और उसको अंदर बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करके वही जो वायर जो आपके टीवी में जा रहा है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको टीवी के ऊपर दिखाता है. इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? जब डिजिटल का सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट होता है, एंड दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इन मोस्ट ऑफ दिस, ऑल जो आप देख रहे हैं उसमें दैट्स व्हाट, सी क्वालिटी लॉस एंड स्टफ, कन्वर्जन रिलेटेड क्वालिटी लॉस, ये वही बता रहे हैं लोग. जब ये डिजिटल से एनालॉग के अंदर कन्वर्ट होता है तो क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है. इसीलिए अगर आप कोई भी कंपेयर करेंगे, VGA से कुछ भी आप कनेक्ट करें और उस पर कुछ मूवी प्ले करें और DVR या HDMI के केबल से कनेक्ट करें और वही सेम मूवी प्ले करें, you'll see a big difference. But given that your computer or your TV supports the digital conversion or the digital card, अब जब LCD digital TV आ गए, so then it required no conversion. वो direct digital signal आए और digital is showed you, so there was no need to convert it, which in that case जो quality थी वो बहुत अच्छी हो गई. Quality got really better, and you know it was generally sharper than their analog connected counterpart. So this is a little analog and digital comparison they wanted to do in this document. अब जो ये LCD जो पैनल है उसकी वो कंस्ट्रक्ट कैसे हुए? The two most popular methods of manufacturing LCD panels are twisted pneumatic, which is called TN, and the other is in-plane switching, which is called IPS. Now, each method has its strengths and weaknesses, but of the two, IPS is regarded as having the best color representation in all angles. All angles meaning कहीं जब कोई भी एंगल से आप देखो, सीधे देखो, साइड से देखो, या all angles से, IPS की जो मैन्युफैक्चर्ड LCD टीवी है उसकी कलर रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगी कंपेयर टू TN की. बट TN जो है उसकी जो स्पीड है वो फास्टर है, and it's less expensive because it's easier or cheaper to make. Now, TN places two electrodes on opposite sides of the liquid crystal layer. The electrodes are attached to the inside of two polarizing surfaces, each rotated at 90 degrees with respect to the other. लिक्विड क्रिस्टल के लेयर के ऑपोजिट साइड में, दोनों ऑपोजिट साइड में 2 इलेक्ट्रोड्स की लेयर ये लोग रखते हैं, which is attached to the inside of the two polarizing surfaces. Okay, 90 degrees rotate करके वो रखते हैं. When the light enters one side and travels straight through, the other side जो है वो उसको ब्लॉक कर देती है लाइट को. The light must twist 90 degrees to be allowed through. लाइट को 90 डिग्री जब तक से वो नहीं घूमेगी वो लाइट थ्रू नहीं होगी. जब तक से वो लाइट थ्रू नहीं होगी, you're not gonna see anything on the screen. Now, think of the crystals as a thin rod. कोई पतली सी कोई डंडी या rod आप वैसे समझो उसको, crystal को just think of it like that. Now, when an electrical field is generated by the electrodes, the crystals align lengthwise. वो लंबे जो crystals है ना, वो छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स है ना, जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रोड जाते हैं वो खुद ही अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, एक लंबी लाइन बन जाती है उसकी, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोड, एंड दे अलाउ द लाइट टू पास स्ट्रेट थ्रू. जब वो दो लाइन बन जाती है, बीच के अंदर जो गैप होता है उसके थ्रू लाइट पास हो जाती है, एंड देन द रिजल्ट इज दैट द लाइट इज ब्लॉक्ड फ्रॉम मेकिंग इट टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. सो बिकॉज ये जो क्रिस्टल जो साइड में लगे हुए हैं क्रिस्टल उसको लाइट को प्रिवेंट करती है क्रिस्टल्स के थ्रू जाने में. तो उससे क्या होता है कि क्रिस्टल लाइट अप हो जाते हैं, उससे पिक्चर बन जाती है, और जो इलेक्ट्रोड्स की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट किसी हमारी आई के ऊपर नहीं आती है. इन दैट सेंस दैट यू आर एबल टू सी द पिक्चर. नहीं तो अगर वो क्रिस्टल्स ना हो, देन जो इलेक्ट्रोड की लाइट है इट्स गोना हिट डायरेक्टली ऑनटू योर आई, यू आर नॉट गोना सी एनीथिंग, यू आर ओनली गोना सी लाइट.
Now, when the electrodes are off, the crystal rotate parallel to them and are influenced by the coating of the electrode to align to each one, so they are rotated 90 degrees with respect to the crystal at the opposing electrode. The crystal naturally influenced to remain parallel to adjacent crystal, but the influence of the electrodes to remain parallel to the crystal is stronger and causes the chain of crystal in between to twist gradually as they progress from one electrode to the other, following a helical path. The helix rotates the passing light 90 degrees so that it now aligns with the opposite polarizer and appears to pass through the observer. Basically same बोल रहा है, as soon as the electrodes जो है off हो जाती हैं, the crystal जो है वो parallel और crystal जो है they start aligning themselves until they rotate to the 90 degrees. 90 degrees के अंदर जब वो rotate होते हैं, जो उनका जो naturally formed जो उनका design है crystals का, वो 90 degrees वापस rotate होके influence the crystal is stronger and cause chain of crystal in between two gradually as they progress from one electrode to the other. तो इस path के अंदर वो align होना शुरू हो जाते हैं, which eventually gives you an image onto the screen. Now, TN exhibits the unfortunate characteristic of shifting the colors of the image as the observer views the screen from wide horizontal and vertical angles. At extreme angles, the light and dark shades appear to swap places. जो TN के अंदर है ना, जो TN manufactured twisted manufactured LCD screens होते हैं, वो उसके अंदर ये जो खामी बता रहे हैं ना कि आप कभी एक बहुत ही एक्सट्रीम एंगल से, लाइक बहुत साइड से अलग अलग एंगल से उसको देखेंगे ना आप वो टीवी को, तो उसके अंदर एक लाइट और डार्क है ना, आपको शेड जैसा अपीयर होता है, ठीक है ना. और that's the ये खामी है LCD टीवी की, स्पेशली विद द TN मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है. और ऑलमोस्ट एज अ नेगेटिव, जैसे नहीं हम पुरानी वो कैमरा होता था जिसके अंदर वो पॉजिटिव नेगेटिव रील लगाते थे, वैसे ही आपको एक है ना पीछे वो एक इमेज दिखना शुरू होता है, लाइट एंड डार्क. अब आप आजकल की टीवी में ऐसा नहीं होता है, सो आई एम नॉट श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड नो दैट, बट वो इमेज डिफरेंट एंगल से आप देखेंगे आपको काला और सफेद दिखेगा, सो इमेज गेट्स लिटिल बिट ब्लरी. Now, TN panel also tend to react to pressure when touched. ये भी बहुत true है. जब आप स्क्रीन को like थोड़ा सा टच करेंगे ना, तो आप उसमें से ना एक कुछ शुआएं जैसी निकलेंगी. It's like it's like a circle. Like you touch the screen a little bit hard, and you will see like the crystals are realigning out of your finger, pretty much. कभी try करिएगा अगर आपके पास LCD TV हो तो, and you will see that. Now, blanching the area under a finger pressed against the screen, for instance. However, the faster response rates that lead to more fluid image changes make TN a favorite technology for gamers and video enthusiasts. ये true है कि TN जो है उसका जो response rate है, the refresh rate जो होता है, वो pretty high है. तो अगर उसको सीधा देखो, स्क्रीन को सीधा देखो, तो उसकी जो क्वालिटी है अच्छी है. और मोस्टली ये जो गेमर्स होते हैं, बिकॉज गेमर्स आर जस्ट सिटिंग स्ट्रेट टू द स्क्रीन, दे आर प्लेइंग गेम्स, यू नो, दे आर नॉट रनिंग अराउंड द रूम प्लेइंग द गेम. सो स्ट्रेट थ्रू एक सेम एंगल से वो लोग गेम खेलते हैं. उनके लिए इट्स अ परफेक्ट सिस्टम एंड चीपर बिकॉज रिफ्रेश रेट इज प्रीटी हाई. उसके अंदर जो आप देखेंगे उसमें ज्यादा ब्रेक नहीं होता है. एंड यू विल सी वंस वी गो डाउन लिटिल बिट मोर ऑन दैट. जो IPS panels हैं, IPS panels have electrodes that are positioned parallel to one another on the same side of the liquid crystal panel, creating an electrical switch in the same plane. The two opposing outside polarizing layers are aligned in the same direction, so to create the helical structure with the crystal in the off state. The opposing glass panels have a 90-degree rotated internal coating. The coating influences adjacent crystals to align with the direction of the coating, as with TN. Unlike with TN, however, the parallel polarizer on the opposite side blocks the light when the electrodes are off. Concept इसका भी थोड़ा same ही है, but unlike इसमें बोल लेना, unlike the TN, however, the parallel polarizer on the opposite side blocks
the light, जो opposite side के ऊपर जो polarizer होती है, it blocks the light when the electrodes are off. Turning the electrodes on results in a parallel alignment of the crystal lengthwise from one electrode to the other. ये concept भी same है जैसे TN के अंदर मैंने बताया, जैसे electron on होते हैं वो they start aligning into a parallel alignment lengthwise, लंबाई में, as they follow the electrical field being generated. This narrows the stack of crystals so that the light passes by them without twisting, thus passing through the similarly aligned polarized on the opposite side. ये crystals इतने narrow होते हैं कि जब वो stack होते हैं, it aligns a little bit better, and it generally provides a little bit better color because of the better alignment and much more narrowed crystals. Now, IPS technology reproduces colors more accurately and does not suffer from the shifts in color when the screen is viewed from wide angle. जैसे मैंने बताया, ये IPS technology है, थोड़ा crystals are a little bit more narrowed, so आप किसी भी different angle से देखेंगे तो आपको इतना black and white दिखेगा नहीं. In my experience, you still do see the black and white sometimes, depending on किस angle पे आप खड़े हुए हो, you still see that, but in IPS it's less than TN manufactured TV. Now these characteristics makes IPS ideal for those who require true to life representation of the original colors of the image displayed. जो basically they call, like, you know, as true as possible it can get. Up to 4K आ गए हैं. 4K TVs are technically supposed to be the true to life representation, but back then LCD was somewhat of a true to life representation at that time. So for that reason, as well as for their lack of reaction to being touched, IPS panels are more suitable for touchscreens, including those on handheld portable devices such as smartphones. तो again, इसको आप टच करते हैं तो उसके अंदर से वो ब्लैक जो मैं बता रहा हूँ, आप टच करेंगे उसके अंदर से कुछ लाइक ऐसे लगेगा जैसे कोई इंक निकल रही है, या it's gonna create like some spot. IPS does not do that, and that's the reason why ये smartphones, और पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं है ये, अब तो LED स्क्रीन आ गई है, बट पहले LCD, पहले भी थे टच स्क्रीन, वो LCD के ऊपर मोस्टली चलते थे because made with IPS contents. Now the drawbacks of slow response and lusterless display of black hues have been mitigated through the generations of IPS technology advancements. जैसे मैंने बताया, वो जो ब्लैक ह्यू की मैं बात कर रहा था, आई स्टिल सी इट इन सम आईपीएस टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी कम हो गई है एज आईपीएस टेक्नोलॉजी एडवांसेस, उसकी टेक्नोलॉजी आती रहती है. वो ब्लैक जो आपको दिखता था वो काफ़ी कम हो गया है, और जो रिस्पॉन्स रेट था उसका वो भी ज़रा तेज़ हो गया है. But nevertheless, the IPS remains a more expensive solution that requires more power to operate than TN. Obviously, IPS requires more power, but it is more better when it comes to full coloration, and it is better when you're doing a touchscreen. Okay. एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है इन्होंने. Cost wise, obviously TN is less, IPS is more. Color accuracy TN की कम है, IPS की ज़्यादा है. Reaction to touch, जब हम TN को टच करते हैं उसका बहुत रिएक्शन होता है, जब हम IPS को टच करते हैं लेस रिएक्शन होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि IPS का कोई रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन होता है, and that's what I was talking about earlier, कि IPS भी टच करते हैं, you sometimes still see it depending on कैसी टेक्नोलॉजी उसके LCD में यूज़ की हुई है. व्यूइंग एंगल बहुत ही नैरो है इसका, एज आई सेड. TN को आप यूजुअली सीधा सीधा देखोगे या थोड़ा सा साइड में जाके देखोगे तो आपको सही दिखेगा. बहुत ही एंगल से देखोगे, बहुत ही साइड से देखोगे तो थोड़ा सा आपको ब्लरीनेस या ब्लैक एंड वाइट थोड़ा दिखेगा. IPS जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर you can go all the way to the right or left or in the middle, you know, up and down, wherever. आपको उसकी जो क्वालिटी है pretty good दिखेगी. Again, this is all for LCD. We are not at LED yet. LED is a whole different ball of coloration, which you'll see down the road. Power required, obviously TN takes less and IPS takes more because it needs more power to align those crystals. ठीक है. Pixels addressing. We're gonna go over this real quick. So the two major types of LCD displays have been implemented over the years, right? One is called the active matrix screen, and the second is passive matrix screen. Another type is called dual scan, which is a passive matrix variant. Now the main difference is in the quality of image. However, when used with computers,
each type uses light behind the LCD, which is a backlight LCD. हमने सुना होगा इसके बारे में. Now the legacy LCD panels had one or more fluorescent bulbs as backlight. जो fluorescent जो old technology है fluorescent bulbs की वो पीछे वो जलाते थे, that used to be called backlight, but those LCD TVs जो है थोड़ा गर्म हो जाते थे. Now the modern LCD TVs, LCD panels use LEDs to light the display more precisely. थोड़ा सा mistake है. Above I said LCD and LEDs. Remember, and I want to differentiate that. LCDs came out, then LEDs came out. The whole idea between the LEDs is LED, I would say, is a child of LCD. Similar technology, but the lighting effects are different. मैं आगे जाके उसको थोड़ा cover करूँगा. What I was earlier talking about was OLED, which is different. Okay, so I just wanted to make that clarification here. So the modern LCD panels use LEDs to light the display more precisely by individually dedicating a separate light source to each pixel. The following discussions highlight, हम आगे जाके इसको cover करेंगे. The following discussions highlight the main differences among the pixel addressing variants. अगर इसमें आपको समझ नहीं आया हो तो बेसिकली ये इट्स ओनली सेइंग कि जो LCDs जो है मॉडर्न LCDs जो आ रहे हैं उसके अंदर एक एक पिक्सेल्स के पीछे एक LED की लाइटिंग लगी होती है और वो एक एक LED उस पिक्सेल्स को पीछे से लाइट देता है. पीछे से लाइट देने की वजह से आपको जो आगे जो स्क्रीन दिखती है वो मच ब्राइटर दिखती है, मच कलरफुल दिखती है. इज बिकॉज ऑफ दैट LED बैकलाइटिंग. पुराने LCDs के अंदर ये फ्लोरेसेंट बल्ब लगे होते थे which gets hot too. And their light efficiency is not great. Now the active matrix screen is made up of several independent LCD pixels. A transistor at each pixel location, when switched among various levels, activates two opposing electrodes that align the pixel's crystal and alter the passage of light at that location to produce hundreds or thousands of shades. The front electrode at least must be clear. This type of display is very crisp and easy to look at through nearly all oblique angles. And it does not require constant refreshing to maintain an image because transistors conduct current in only one direction and the pixels act like a capacitor by holding its charge until it's refreshed with the new information. Concept is almost the same here. Electrodes are passed. Crystals are aligned properly. In this case basically what's happening, यहाँ पे two opposing electrodes instead of one electrode as above, and because of the two opposing electrodes, the front electrodes जो है वो basically clear होता है, and इस technology की वजह से आप जो image है काफी clear देख सकते हैं compared to the above LCD we talked about. And because इसके अंदर दो opposing electrodes होते हैं, you can obviously see from any angles. Also उसका जो refresh rate है बढ़ जाता है because it does not require constant refresh. The major disadvantage of an active matrix screen is that it requires larger amount of power. Power बहुत चाहिए होती है because to operate all of the transistors को operate करने के लिए power काफी चाहिए होती है. One for each red, green and blue subpixels. जो तीन main pixels होते हैं उसको power करने के अंदर काफी power चाहिए होती है. Even with the backlight turned off, the screen can still consume battery power at an alarming rate. Power off कर दोगे फिर भी उसकी जो battery power है काफी electricity consume करती है. Even more so when conventional fluorescent backlights are employed. Quality अच्छी है इसकी, but it takes more power, even obviously more than fluorescent, because जब वो off होता है तब भी वो जो उसके electrodes हैं can consume the power. Passive matrix. The passive matrix display does not have a dedicated transistor for each pixel or subpixel, but instead a matrix of conductive traces. In simplified terms, for a single pixel, when the display is instructed to change the crystalline alignment of a particular pixel, it sends a signal across the x and y coordinate traces that intersect at that pixel, thus turning it on, basically.
इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर जो है ना वो ईच पिक्सल के पीछे नहीं लगे होते हैं, और या तो सब पिक्सल्स के पीछे नहीं लगे होते हैं, बट इंस्टेड ये जो है जब हम पावर ऑन करते हैं ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर ट्रेवल करके एक जगह पे मीट करते हैं. जैसे यहाँ इफ यू से एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अप एंड डाउन, वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं. दैट इज व्हाट एक्चुअली टर्न्स इट ऑन और प्रोड्यूसेस अ पिक्चर. दो जगह आके मीट करते हैं, wherever it intersects it starts constructing an image, जो कि it will show you right here. And by doing that, it meets in a lot of different locations, not just here, meets at a lot of different locations and starts creating an image. The circuits controlling the columns are synchronized, you see, to fire when that row's transistor is active and only for the pixel that should be affected on that row. Angles of visibility and response times, the time to change the pixel suffer greatly with passing minutes because neighboring pixels be affected. Okay, basically that's as I said, right? हमें तो समझाने के लिए खाली एक डॉट दिखाया हुआ है इधर. Excuse me. पर जब आपको पूरी पिक्चर दिखती है, ये जो इंटरसेक्शन ना, ये एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन बहुत जल्दी बहुत सारी जगह पे होता है. जैसे पीछे से उसको इंस्ट्रक्शन आता है उस हिसाब से ये इंटरसेक्शन हो के पूरा एक इमेज बनाता है. अगर हमारी जो लाइव जो आईज है उसको नहीं दिखता है, but if you play this in slow motion you will actually see the x and y axis meeting and creating a dots throughout the TV. अगर बहुत ही slow motion में आप देखेंगे ना, you will see that. Because of the refresh rate हमारे जो human eyes को नहीं दिखती है, it forms a picture. तो हमें किसी की शक्ल दिखती है टीवी के अंदर, it's merely a dot. So many dots, so many pixels are combined together. So many pixels combined together at a very fast rate, which human eye cannot see it in a pixel form. Hence, we see an entire picture. So dual scan जो है is a variation of passive matrix display. The classic passive matrix screen is split in half to implement a dual scan display. Each half of the display is refreshed separately, leading to increased quality. Dual scan के अंदर भी same, it's almost the same, but it's divided in half, and half side और दूसरी half side at a different rate वो refresh होती है, based on what they're saying here, right? Although dual scan improves on the quality of conventional passive matrix display, it cannot rival the quality produced by active. जो dual scan है is a little bit better than passive matrix display, but obviously active matrix displays जो है उससे better नहीं है. Okay, because active matrix, as I said, takes more power, it aligns the crystals much better, passes the light much better, hence the much better picture. The main differences between active matrix and typical passive matrix are image quality and viewing angle. Again, same thing. क्वालिटी अच्छी होती है एक्टिव के अंदर, पैसिव में नहीं होती है. किसी अच्छे एंगल से आप किसी भी एंगल से आप एक्टिव को देख सकते हो. पैसिव मैट्रिक्स so you cannot see it from all the angles. Because the computer takes hundreds of milliseconds to change a pixel in passive matrix display compared to tens of milliseconds or less in active. ये basically वही बोल रहे हैं कितना जल्दी ये millisecond, hundreds of thousands of milliseconds के अंदर ये pixels change होते हैं, which human eye cannot see that rapid change. But even then जो ये बोल रहे हैं कि passive के अंदर जो because the computer takes hundreds of milliseconds to change pixel in passive display compared with tens of millions or less in active. Passive के अंदर काफी time लगता है. I mean, it's a millisecond, but still it takes more time to change the pixels compared to less time it takes in active matrix. That's the reason why passive के अंदर display image is not that great. The response of the screen to rapid changes is poor in passive, causing for example an effect known as submarining effect. That is, on a computer with a passive matrix display, if you move the mouse pointer rapidly from one location to another, it will disappear from the first location and reappear. ये बहुत common चीज़ है.
हम जब ये माउस, अगर आप देख रहे हैं मेरा मूव हो रहा है, अब देखिए मैं जितना भी इसको जल्दी मूव कर रहा हूँ, मे बी ऑन ऑन आपके साइड के ऊपर जो लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं शायद इतना क्विकली आप ना देख सकें, बिकॉज दैट इज ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी वी आर डूइंग लाइव स्ट्रीमिंग. बट समवन इन पर्सन, इफ आई एम सिटिंग, अगर मैं कंप्यूटर के पास बैठा हूँ और इतना तेज तेज माउस मूव कर रहा हूँ, जो सबमरीनिंग इफेक्ट्स को बोल रहे हैं ये लोग, कि जो अगर मैं तेज मूव करता हूँ तो कभी क्या होगा कि जहां से आपने मूव किया होगा ना, वहां से ये कर्सर डिसअपीयर हो जाएगा. एंड व्हेन इट डज दैट, बेसिकली it is talking about the submarining effect. It's obviously it's because of the poor response rate. The poor response rate of passive matrix display also makes them suboptimal for displaying video. Especially अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ movies की कुछ देख रहे हैं, the effects on the passive matrix displays are gonna be somewhat of laggy display, I would say. Laggy in a sense के कोई हाथ मूव कर रहा है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हाथ लाइक स्लो मूव हो रहा है, या बफरिंग टाइप सिनेरियो आप कहते हैं उसको. If you watch the screen and gradually reposition yourself laterally farther away from the center of the passive matrix LCD, you eventually notice that the display turning dark. ये same चीज they're talking about it, so I'm going to skip all of this right now. They're just talking again about the same, कि आप अलग अलग डिस्टेंस से भी देखेंगे, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल की बात नहीं कर रहे हैं. अलग अलग डिस्टेंस से भी आप देखेंगे तो ये पैसिव के अंदर वो आपको डार्क टर्निंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लाइट दूर से फिर रिड्यूस होना शुरू होती है. सो आई विल स्किप दिस इज देयर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. Backlight sources, a source of confusion for users in industry professionals alike. LED displays are merely LCDs. See, they're talking about it. जो LED displays जो है, जो काफी hype हुआ था, LED TV. Well, it's nothing more than LCD. LED is the same concept as LCD. The only difference is the bulbs. Instead of fluorescent bulb, उन्होंने LED bulb use किए हुए हैं LED TVs के अंदर. But as यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखिए खुद ही ये लोग बोल रहे हैं कि the general consumer would not rush to purchase a new display that goes by the same name as their current display. अगर LED को भी ये लोग LED को भी अगर ये लोग LCD कह के बेचते तो कोई बाय नहीं करता. So they came up with a new name, LED TV. You know, concept is the same crystals align, same path they are taking. The only difference is fluorescent light and LED light. That's it. LED light is much brighter, takes less power, and it comes in a smaller pack, so you can align it to each pixel. Only lighting effect. Technology is almost the same. Because there are many individual control LED, they are saying the same thing what I just mentioned. So we will cover this. Additionally, this we need to cover. So there is no need for laptops with LED displays to convert the DC power coming into the laptop to the AC needed to power traditional fluorescent backlight. जो laptops जो हैं उसके अंदर DC, we don't need, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है DC पावर को AC पावर में, जो अमूमन फ्लोरेसेंट बैकलाइट जो होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्लोरेसेंट जो लाइट है उसको DC से AC के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए एक इन्वर्टर बोर्ड लगाते थे उसको कन्वर्ट करने में, जो इन्वर्ट करता है DC को AC में. बट LED जो है वो DC में ही ऑपरेट हो जाता है, तो इन्वर्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है. They're saying LEDs operate on DC power just like the rest of the laptop. So पूरा लैपटॉप वैसे भी DC के ऊपर काम करता है, तो वो डायरेक्ट LED से ही उन्होंने कनेक्ट कर दिया, उन्होंने इन्वर्टर बोर्ड निकाल दिया उसमें. As a result, the system have no inverter board. Okay, आगे जाके और डिस्कस करेंगे जब हम लैपटॉप्स के पार्ट कवर करेंगे चैप्टर 9 में. So LED displays rival plasma displays in clarity and variations in luminance. This variation is referred to as a contrast ratio in a display. Plasma TV का हम थोड़ा cover करते हैं. That's what they're talking about. The word plasma refers to a cloud of ionized, charged particles, atoms and molecules with electrons in an unstable state. Basically, plasma में जब बिजली होती है, हमने बहुत टाइम देखा हुआ है, जब जो लाइटनिंग इफेक्ट होता है
नॉट लाइटनिंग इफेक्ट एक्चुअली, जो ट्रांसफार्मर्स होता है, कभी कभी जो फटता है वो ट्रांसफार्मर, उसमें से प्लाज्मा एक लाइट निकलती है। वो जो लाइट जो है, इट्स नथिंग बट एन अनस्टेबल स्टेट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो है वो आयोनाइज चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अनस्टेबल स्टेट के अंदर वो बहुत ही जल्दी जल्दी मूव होते हैं, that creates a plasma effect. Okay, this electrical imbalance, see imbalance is used to create light, उससे light generate होती है, बहुत unstable होते हैं वो, और उसी से light create होती है. And from the change in energy levels as they achieve balance, plasma display panels are also called PDP, called plasma display panels, create just such a cloud from an inert gas such as neon by placing electrodes in front of and behind sealed chambers full of the gas and vaporized mercury. This technology of running a current through an inert gas to ionize it is shared with neon signs and fluorescent bulbs. इसमें बेसिकली देखें क्या कर रहे हैं, सेम टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट, उसमें नई 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 चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ये इलेक्ट्रोड्स आर द सेम, ठीक है ना, फ्रंट पे और बैक पे इलेक्ट्रोड सेम है, बीच के अंदर जो लाइन है उसके अंदर ये प्लाज्मा डालते हैं, प्लाज्मा उसको चेंबर के अंदर सील करके गैस भर के और वेपराइज मर्क्यूरी भर के उसको सील कर देते हैं, और वो जो इम्बैलेंस मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स से जो लाइट बनती है वो क्रिस्टल्स को शाइन करती है, उससे पिक्चर आती है. यूजुअली अगर आप नोट करेंगे, नियॉन साइंस बहुत कॉमन थी, पहले गाड़ियों के नीचे लगाते थे, अभी भी लगती है नियॉन की, काफी स्टोर्स के अंदर आप साइन देखेंगे, अब तो एलईडी भी आ गई है, पर पुराने पहले स्टोर्स के अंदर नियॉन की साइन लगती थी, वी आर ओपन, ठीक है ना, वी आर ओपन की साइन, कोई कोई मेन्यू की साइन वो लोग लगाते थे, उसके अंदर नियॉन साइंस के अंदर गैस भरी हुई होती थी. सेम, कभी वो टूट जाती थी ना, यू वुड सी उसके अंदर से थोड़ा सा एक स्मोक जैसा बाहर निकलता था, और ये फ्लोरेसेंट बल्ब के अंदर भी होता है. Because of the pressurized nature of the gas in the chambers, PDP are not optimal for high altitude use. Usually aircraft में or anything high altitude, you know, जितना आप जमीन से ऊपर जाओ उतने high altitude में, this is not an ideal technology to use because of the compressed gas inside. Okay, and you would also hear like a buzz sound, especially if you go up. Because of the emission of light that is that this process produces, plasma display have more in common with legacy cathode ray tubes. जो पुराने CRT display आते हैं ना, थे ना, ये somewhat of उस technology के अंदर आती है, because of the जो this type की ये light produce करती है. In fact, as with CRTs, phosphors are responsible for the creation of light in the shade of the three primary colors red, green, blue. पुरानी टीवी के अंदर भी बेसिकली फॉस्फर था जो थ्री प्राइमरी कलर को क्रिएट करता था, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इससे सारे दूसरे कलर्स पैदा होते थे. इन दिस केस द पिक्सेल्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, नो बैकलाइट इज रिक्वायर्ड विद प्लाज्मा, है ना. तो बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्लाज्मा जो अपनी लाइट खुद क्रिएट करता है, इसके लिए बैकलाइट की जरूरत है नहीं, वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है अंदर एटम मॉलिक्यूल्स का, वेरी अनस्टेबल बट इट क्रिएट्स लाइट, अनस्टेबल बट कंट्रोल्ड. Also, a feature shared. Okay, the phosphor chemical in CRT and PDP can be used up over time. Okay, ये भी आप लोगों ने काफी देखा होगा. प्लाज्मा टीवी के अंदर अमूमन क्या होता था, ओवर टाइम जैसे टाइम पैसेज उसकी क्वालिटी ड्रॉप होती थी. किसी प्लाज्मा टीवी के अंदर क्या होता था कि अगर इसे 30 इंच स्क्रीन है आपकी, तो ऊपर टॉप राइट या टॉप लेफ्ट की थोड़ी स्क्रीन डाई होना शुरू हो जाती थी, या वो थोड़ा सा पार्ट जो है आपको लगता था कि ये उसके अंदर गैस भरना शुरू हो गई है. ये प्लाज्मा टीवी में अमूमन होता है. प्लाज्मा टीवी की यूजुअली लाइफ इज आल्सो नॉट दैट लॉन्ग. The refresh rate for plasma TV has always been 600 Hz. This is very fast refreshing rate. 600 Hz is it's good, but we'll talk more about it. That's ensuring fluid video motions. तो वीडियो तो बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि अब के जो टीवी में आती है अमूमन
I mean आप different types of TV ले सकते हैं, but जो standard refresh rate है वो 60 Hz है. कहाँ 60 Hz और कहाँ 600 Hz. So obviously 600 Hz की जो video quality है would be way better. The result is a display that produces the state of the art in video motion fluidity. Higher refresh rate in LCD leads to an unwanted artificial or non-cinematic quality to video known as a soap opera effect. जो high rates हैं LCD जो है उसके अंदर वो unwanted art एक cinematic type of quality create कर देते हैं. They are calling it here as a soap opera effect. Now the PDP do not require compensation and should not suffer from this effect though. PDP में ये issue नहीं है. LCD के अंदर ये issue है कि उसके high refresh rate के अंदर जो है उसके अंदर एक unwanted ना चाहने वाली artificial quality create हो जाती है. They are talking about that here. When watching movies, most viewers appreciate the somewhat hazy, almost visually slurred quality described by some as cinematic. The soap opera effect is a result of higher refresh rate and the intentional quality enhancement feature of newer television called motion smoothing. Motion smoothing is a form of anti-blur. Basically, it's an anti-blur technology है जो compensate करती है natural tendencies of LCD. LCD के जो flaws हैं उसको take care करती है. By this technology, you are able to see the quality a little bit better. I'm gonna pass this because this is mostly, I feel this is not relevant as much. Yeah, I'm gonna move on to the OLED TVs. Yeah, this is. They're talking about the pricing, you know, that LCD panels, because the backlight cannot be completely blocked by the liquid crystal, thus producing hues that are more gray than black. LCD backlit with LEDs, however, are able to dim selective areas or entire image completely because of the relative cost effectiveness to produce PDP of the same size as given LCD. Plasma display historically enjoy more popularity in a larger market. हाँ सेम बोल रहे हैं. प्लाज्मा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी. That I will agree. Compare side by side LCD and plasma की technology, plasma का viewing experience was pretty good, but as I said, there were some drawbacks and the life of that product was not that great. उसको ज़रा सा धक भी लग जाता था उसके अंदर, उसका शीशा का टूट गया तो the gas would come out. It was a little mess, and they would heat up a lot. That was another problem with the plasma TV. Moving on to OLED display. Organic light emitting diode. This is also called OLED or OLED TVs or OLED displays. Unlike LED displays are really the image producing part of the display, not just the light source, in much the same way as a plasma cell places an excitable material between two electrodes. OLEDs are self-contained cells that use the same principle to create light. An organic light emitting compound forms the heart of the OLED, and it's placed between an anode and cathode, which produce a current that runs through the electroluminescent compound, causing it to emit light. Excuse me. Same concept, but different, somewhat of a different lighting technology. They're calling it an organic light emitting compound. Also, same thing, placed between the anode and cathode crystals. It runs through the compound, causing the light to emit, and आप display देख सकते हैं उसके अंदर. 11 on the background is usually opaque, allowing a rich black display when the OLED cell is not lit. The front should be transparent to allow the light. OLED, okay. The thin film necklace hair use. So because of the thin light nature of the panels, OLED displays can both replace existing heavy full color LED signs like the ones you see in Las Vegas and all that, and multimedia advertising to the side. LEDs create light and have been used in recent years for business. They're talking about the different display lights and things like that, but
मैं क्विकली आपको बताता हूँ LCD का और LED का आपने देख लिया. OLED का बेसिकली ये डिफरेंस है यहाँ पे जो ये लोग बता रहे हैं. It is a self-contained cell. Okay, principle is the same, but it's a self-contained cell which emits organic light. So its lighting capacity is a little bit better than LED. It is also placed in between the anode and cathode. उसके अंदर जो electricity run होती है, through that the electroluminescent compound, it causes the light to emit, and because of that the backlight is pretty powerful, which shows you a better image. So as with LCD panels, OLED panels can be classified as active matrix. So yeah, active matrix it can be classified as that, but I'm not sure if this is true though, but they're saying it, so we'll read more about it. As you might expect, AMOLED displays have better quality than PM. Okay, same concept. PM is basically passive matrix, AM is active matrix. But as a result, require more electrodes. A pair of each OLED. AMOLED displays have resolutions limited only by how small the OLEDs can be made, while the size and resolution of PM OLED displays are limited by other factors such as the need to group the electrodes for the OLED. The power to drive an OLED TV display is on average less than that required for LCD. Again, OLEDs, as I've been mentioned किया, power consumption इसका कम है, needs less power to power or to light. However, as the image progresses toward all white, the power consumption can increase to 2 or 3 times that of the LCD panel. Okay, yeah, as the image है, if it progresses towards the white section, the power consumption can go up to 2 or 3 times of the LCD panel. So OLED in that case can take more power. Energy efficiency lies in future development. So अभी भी OLED के अंदर इतनी कोई advancement according to them आई नहीं है in terms of power. Which reason darker text on the lighter better mean? Okay, this is fine. Although the early materials used in OLED have demonstrated drastically short lifespan than those in LCD and plasma panels, the technology is improving and has given. According to this, OLED were supposed to last a little bit less than LCD. Okay, but अभी की जो technology improve होके आ गई है, OLED lasts pretty long. They commercially, they're talking about the commercially produced OLED to remain viable long past the life expectancy of other technologies. The cost of such panels will continue to decrease. Obviously, they're talking about the technology to move forward. Two important enhancement to AMOLED technology resulted in the development of the Super AMOLED and Super AMOLED Plus display, both owing their existence to Samsung. The Super AMOLED display removes the standard touch sensor panel found in the LCD and AMOLED display and replaces it with an on-cell TSP that is flat and applied directly on to the front of the AMOLED panel, adding the mere thousandths of a millimeter of the panel thickness. अभी जो technology, basically that's what I was talking about कि जो नई है Super AMOLED and Super AMOLED Plus जो है काफ़ी enhancement हो गई है उनकी. लाइटिंग एक्सपीरियंस भी बेटर हो गया है, उनका जो पैनल है थिनर हो गया है, उसकी वजह से जो लाइटिंग आपको दिखती है वो ज़्यादा अच्छी दिखती है, उसकी वजह से उसका जो इमेज क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है. ये AMOLED Plus and Super AMOLED. The Super AMOLED Plus display uses the same TSP as the Super AMOLED display, and one advantage that it has over Super AMOLED is that it employs 1.5 times as many elements per pixel in each pixel. काफी पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स को भी एक्चुअली ये लोग बहुत कंप्रेस करके उसमें डाल रहे हैं, उसकी वजह से बेसिकली क्वालिटी अच्छी बढ़ रही है. As you can see, 1.5 times more pixels element उन्होंने डाले हैं उसके अंदर. Plus is 18% more energy efficient भी है 18%, which means it takes less power.
The Super AM OLED and Super AM OLED Plus displays are also feature longer lifetime. As I said, ये नई जो technology आई है इनकी, it lasts pretty long, so we don't have to worry about that. The regular OLED TV technology is already out, unless you're buying from like old refurbished stuff, then you might end up with the old technology. Projection system, such as projectors. Another major category of display device is the video projection system, or the projector. Portable projectors can be thought of as condensed video display unit with a lighting system that projects the video display unit image onto a screen or other flat surface for group viewing. Interactive whiteboards have become popular over the past decade to allow presenters to project an image onto the board, as they are virtual markers to draw electronically on the display image. Remote participants can see the slide on their terminal as well as the marker made by the presenter. The presenter can see the same marker because the board transmits them to the computer to which the projector is attached, causing them to be displayed by the projector in real time. They're talking about two things over here. Now we'll get back to that. But quickly, they're talking about a projector, and then they're talking about a whiteboard projector. Two different things, okay? To accommodate using portable units at variable distances from the projection surface, a focusing mechanism is included on the lens. Okay. Let's cover this. I'm gonna pass this. I'm gonna cover this into the rear projection and the other one. Right here, मैं quickly आपको वाज़े करना चाहता हूँ कि जो projector है, एक तो होता है projector, that's different than the interactive whiteboard. Okay, concept is the same. इसके अंदर भी projection ही use होती है, but it works a little bit different, and you'll see that down the road. Rear projection. Another popular implementation of the projection system has been the rear projection television, in which a projector is built into a cabinet behind a screen onto which a reverse image is projected so that an observer in front of the TV can view the image correctly. Early rear projection TV as well as ceiling mount home theater units use CRT technology to drive 3 filter light sources that work together to create RGB image, red, green, blue image. Later rear projection system, including most modern portable projector, implement LCD gates. These units shine a bright light through three LCD panels that adjust pixels in the same manner as an LCD monitor, except that the projected image is formed as with. Okay, basically what this is there's a different type of projector. One is called rear based projector. Basically वो पीछे से लाइट देता है, उसकी जो इमेज होती है वो फ्लिप हुई होती है, स्क्रीन आगे लगी होती है, प्रोजेक्टर स्क्रीन के पीछे लगा हुआ होता है और पीछे से लाइट थ्रो करता है पर्दे के ऊपर. एक तरह का पर्दा ही समझ ले, वाइट किस्म का पर्दा हो या जो भी स्क्रीन होती है, प्रोजेक्शन स्क्रीन. और जो फ्रंट के ऊपर जो लोग देखते हैं उनको वो इमेज सीधी दिखती है. दूसरे प्रोजेक्टर ऐसे आते हैं जो हम आगे से जो मूवी थिएटर में लगे होते हैं, मूवी थिएटर की स्क्रीन देख रहे होते हैं, पर जो लाइट जो आती है वो पर्दे के सामने से आती है, और वो जो पर्दे के सामने से आती है, that's a direct light onto the projection screen, forming a picture at a bigger scale. Digital light processing is another popular technology that keeps rear projection TVs on the market and benefits portable projector as well, allowing some projectors to be extremely small. Special DLP chips, referred to as optical semiconductors, have roughly as many rotatable mirrors on their surface as pixels in the display. DLP, digital light processing, is similar technology. It has a special chip. It's referred to as the optical semiconductor. उसके काफी many rotatable mirrors होते हैं. Mirrors ये projection के अंदर mirrors लगे हुए होते हैं जो light को mirrors के through reflect करके बाहर की तरफ फेंकती है. इसके अंदर ज़्यादा rotatable mirrors लगे हुए होते हैं on their surface as the pixels in the display resolution. So the light की जो source है, colored filter wheels और colored light जो है sources are used to switch rapidly among primary and sometimes secondary colors and synchronize with the chip mirror position 1000 times. इतने उसमें rotations के लिए काफी mirror लगे होते हैं, तो light बहुत जल्दी bounce होती है. जितने ज़्यादा mirrors लगे होते हैं, the faster the light bounces per second, the better quality you get
presented on the screen with this DLP special chip projectors. Okay. Brightness projection systems are required to produce a lighted image and display it many feet away from the system. The inherent challenge to this paradigm is that ambient light tends to interfere with the image projection. One solution to this problem is to increase the brightness of the image being projected. This brightness is measured in lumens. Okay, they're just talking about, like, मैं quickly समझा देता हूँ. आप कोई सस्ता सा प्रोजेक्टर बाय करेंगे चाइना से या कोई, उसकी जो ब्राइटनेस जो होती है, ब्राइटनेस को मेजर करते हैं लूमेंस के अंदर. हायर द लूमेंस द मोर द ब्राइटनेस, एंड यू विल सी दैट इन द लाइट बल्ब्स एंड ऑल द एलईडी लाइट बल्ब्स एज वेल. सो प्रोजेक्शन के अंदर जो सस्ते वाले प्रोजेक्शन होते हैं, अगर आप उसको लाइट जब सूरज की रोशनी में चलाएंगे या घर रूम की लाइट खुली हुई हो और उसको चलाएंगे तो इमेज जो है आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा जो प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर इलिमिनेट होगा. लेकिन अगर आप लाइट बंद करके उसको देंगे तो इट्स गोना लुक प्रीटी क्लियर, यू नो. बट ऐसे भी प्रोजेक्टर्स आते हैं जिसका ब्राइटनेस बहुत पावरफुल होता है. उसका लूमेन जो होता है, उसके अंदर का जो भी बल्ब लगाया हो, एलईडी या जो भी बल्ब उन्होंने लगाया हो, काफी पावरफुल होता है. इट क्रिएट्स मोर लूमेन्स एंड यू कैन यूज दैट इन इवन द ब्राइट रूम के अंदर भी वो प्रोजेक्शन आपको काफी क्लियर दिखेगा. They're talking about that here. The foregoing discussion on the projection systems are rated, chosen, purchase. हाँ, वही कि lumen के base के ऊपर वो purchase होता है. Usually once maximum supported. As I said, higher the lumens, the better the projection. But in my experience, I have seen there are some products. They propose that we have such high lumens on this projector. बट जब आप उसको एक्चुअली बाय करके यूज करते हैं, देयर क्वालिटी इज क्रैपी. तो and that's probably false marketing or whatever they're doing, but I would recommend, if you were to go that route, go with something name brand. वो name brand के काफी tested किए हुए के products होते हैं. So some loose guidelines can help you choose the bright projector for your application. Keep in mind that video versus static image projection requires more lumens, and 3D output requires roughly double the lumens of 2D projector. 3D projectors भी आ गए हैं, which requires more brightness compared to 2D projectors. Additionally, use of a full screen, which is a 4:3 aspect ratio projector system in a business environment versus a wide screen 16:9 ratio home theater projector requires approximately double the lumens of output at the low end and only 1.2 to 3 times at a higher end. Depending on the aspect ratio आप set करते हैं, उस हिसाब से उसके lumens are required to produce the proper image. 16:9 का जो ratio है, usually ये सिनेमा में आप जाते हैं, मूवी थिएटर में, ये believe उनका actually hold on, movie theater का I'm not confirmed, but the home theater का जो है 16:9 का ratio works perfectly fine, especially if you're running that in the basement. Cinema scope होता है ऊपर का और नीचे का थोड़ा, you will see black and then the video is going to show in the middle. That's a 16 and a 9 ratio. If you are able to completely control the lighting in the room where the projector is used, producing little to no ambient light, the projection, they're just talking about आप लाइट बंद कर दें रूम की, अंधेरा हो जाएगा तो आपको काफी क्लियर दिखेगा. प्रोजेक्टर प्रोड्यूसिंग एज लिटिल, जो प्रोजेक्टर 1300 लूमेंस भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो भी बंद लाइट के अंदर आपको बहुत अच्छा उसका आउटपुट दिखेगा. और लाइट खुला करके करोगे तो you would need at least like 2500 lumens in the office. However, if you can only get rid of most of the ambient light, such as by closing blinds and dim overhead lights, the system should be able to produce 1500 to 3500 lumens in the home theater office. अच्छा, घर में अगर आप चला रहे हैं और घर के अंदर आप completely dark नहीं कर सकते हैं, रूम को खाली लाइट को थोड़ी डिम कर सकते हैं, पूरा डार्क नहीं कर सकते हैं, so you would need at least 1500 to 3500 lumens in the house to be able to see the picture quality properly.
और अगर आप ऑफिस में हैं तो you would need at least 3000 to 4500 lumens to be able to see that clearly in office. Again, this is under no dark location, just some light present. You would need this much of lumens in order to see the quality properly. If you have no control over very well lit area, you will need even more. जहाँ पे बिल्कुल बहुत ही light है, इसकी एग्जांपल मैं आपको क्या दूँ, ड्राइव इन थिएटर्स के बारे में आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं. ड्राइव इन थिएटर यूजुअली रात को होता है, बट समटाइम्स इट गेट्स टर्न्ड ऑन ड्यूरिंग लाइक इवनिंग टाइम, एंड इवन देन समटाइम्स यू आर एबल टू सी द पिक्चर क्वालिटी प्रीटी गुड, नॉट बैड. उसके लुमेंस बहुत हाई होते हैं बिकॉज इन डे लाइट यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग लाइक दैट आउटडोर, you would need a lot of lumens. So again, basic concept is higher the lumens, much brightness you will get from the projector. And they are calling ये सारी जो calculation दी इन्होंने is based on a 120 inch screen, जो projection screen आती है ना उसके ऊपर. A 60 watt of standard light bulb produces about 800 lumens. Output is not linear. However, because a 100 watt light bulb produces over double at 1700 lumens, nevertheless you couldn't get away with using a standard 100 watt incandescent bulb in a projector. The color production is not pure enough and constantly changes throughout its operation due to deposit of soot from the burning of its tungsten filament during the production of light. High intensity discharge lamps, okay, makes sense. Basically, they're just saying कि 60 watt bulb जो है वो usually produce करता है 800 lumens, और 100 watt का जो bulb होता है वो create करता है 1700 lumens. ये incandescent bulb है, LED bulb नहीं है. इन LED bulbs की configuration is completely different. But either way, ये bulb भी अगर आप projection में लगाएंगे, it's not gonna work because उसकी जो production है is not pure enough. And उसका जो dupe deposits points है, it keeps on changing. And जो projector के अंदर जो burning जो एक lamp लगा हुआ होता है, जो देखो वाली high intensity discharge lamp, they get pretty hot as well, especially if you are running, well, you couldn't run it yourself, but जो incandescent टाइप की टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्टर आते हैं उसके अंदर वो दे गेट प्रीटी हॉट. A strong quartz chamber holds the filament in a projector lamp and can be seen inside the outer bulb. It contains a metal halide where the word halogen comes from, gas that glows bright white when the tungsten filament lights up. Depositing the soot on the inside of the projector bulb is avoided by using a chemical process that attracts the soot created back to the filament, where it once again becomes part of the filament, extending the life. So basically ये ongoing process होता है. ये contain करता है metal halide जो कि word halogen की भी पहले bulb आते थे. It's a हेलोजन के वर्ड से ये वर्ड आता है हैलाइड. एक तरह की गैस है जो ब्राइट वाइट का तरह की ग्लो होती है उसके टंगस्टन फिलामेंट के अंदर. सो जब वो डिपॉजिट करता है, डिपॉजिटिंग द सूट ऑफ द इनसाइड प्रोजेक्टर बल्ब इज अवॉइडिंग यूजिंग केमिकल प्रोसेस. एक तरह का चेंबर बोलते हैं ना आप, कि चेंबर के अंदर उन्होंने इसको बराबर से सेट किया हुआ होता है by the help of a chemical which processes and attracts the soot. वो जो एक soot होता है उसको बार बार attract करता है and it creates a filament where it once became a part of the filament extending its life. So it's an ongoing. अभी आप projector के अंदर आप कभी खोल के देखेंगे ना, उसके अंदर एक फर्स्ट ऑफ ऑल शीशे लगे हुए होंगे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे छोटे छोटे, और एक बल्ब जैसा लगा होगा. उस बल्ब के अंदर जो है ना गैस बड़ी हुई होती है, और ये बल्ब जो है रेगुलर इनकैंडेसेंट बल्ब नहीं होता है. it's I would say, like, for the old technology it was like a CRT type bulbs inside which glows with the chemical reaction
with the gas they have filled in. And उस ग्लोनेस की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके आपको बाहर दिखती है. Okay, and expected vacancy will be more for the project bulbs than for standard bulbs. For again, same thing. Projector के bulb जो है, they're special bulb. They're obviously a little bit more expensive than the regular bulb. The metal halide gases used in projector bulb are more expensive than the noble gases used in standard bulb. So again, as I said, ये halide की जो gas है, it came from the word halogen. उस projector के bulbs के अंदर भरी हुई होती है. उसकी वजह से ये बल्ब्स जो है उनका प्रोजेक्शन का जो लूमेंस होता है it's called targeted lumen, you can call it that, because excuse me, it creates a pure light compared to incandescent bulb. as उन्होंने ऐसे कंपेयर किया ऊपर 100 watt बल्ब जो है आपको 1700 लूमेंस देता है, बट ये जो हेलाइट का जो बल्ब है it's actually going to give you more lumens even under less watts, because it's a concentrated light, meaning ये light spread नहीं होती है, ये concentrate होती है to an angle, और वो angle से जाती है जो mirrors लगे होते हैं उसके अंदर, और वो reflect करती है screen के ऊपर. So it's a very very narrowed and targeted light towards a medium, which is the projection screen. I hope that makes sense. Yeah, it's nothing crazy, but it's just the concept of the light, pretty much. If you have questions, just make sure you ask me, and I'll try my best to explain that to you. Cooling down. So although it doesn't take long for the fan to stop running on its own, this is a phase that should never be skipped to save time, with projector bulbs being one of the prizes. Okay. जैसे मैंने बताया कि ये डिफरेंट किस्म का बल्ब होता है. ये हीट अप काफी हो जाता है. हीट अप होने के लिए प्रोजेक्टर जब भी चल रहा होता है उसके अंदर फैन भी चलता है. फैन जो है उसको कॉन्स्टेंटली कूल डाउन कर रहा होता है. बल्ब इतना एक्सपेंसिव होता है कि बल्ब इज द मेन टेक्नोलॉजी, एक्चुअली नॉट जस्ट द बल्ब एंड दोज मिरर्स और द ग्लासेस, दीज टू आर द मेन टेक्नोलॉजी इन हियर. बट बल्ब जो अगर वो खराब हो जाता है, यूएस के अंदर तो आप उसको रिपेयर करना छोड़ ही दें. मे बी इन अदर कंट्रीज यू मे बी एबल टू रिपेयर इट, बट यूएस के अंदर बल्ब इतना महंगा आता है कि यू प्रॉब्ली बेटर ऑफ थ्रोइंग इट आउट. सो cooling down is the main step here, where fan should constantly be running unless वो बल्ब ठंडा हो जाता है, then it will stop. But in my cases it has never stopped. It just heats up all the time, and also depends on what you're running. If you're running some movies, it will always be running. The fan will always be running. Real world scenario. Let's see what they're talking about here. So, a fellow instructor carried his own portable projector with him on the road. At the end of a week's class, he would power down the projector and get his laptop and other goodies packed away. Just before running out of the door, he would unplug the projector and pack it up. As with many instructors, this gentleman's presentations increased in density and length as he became more and more comfortable with the material. Author Toby Scandier ran into him at a training center sometime after his trend had begun. His presentation had been running later and later each Friday afternoon, edging him ever closer to his airline departure time. He admitted that he had gotten into the habit of yanking the power plug for his projector from the wall and quickly stuffing the unit into the carrying case before darting out the door. Not long after their meeting, Toby heard that his projector failed catastrophically. Replacing the bulb was not the solution. One favorite projector is the... okay. So basically, ये बोल रहे हैं simply, and this goes on for most of the electronics, I would say. इस चलते ये first of all projection इस बंदे की चल रही थी काफी time तक. I think from here he's talking about end week's class. For a week class, he had this projector turned on, और जब भी उसको जल्दी में जाना होता था वो properly उसको shut down नहीं करता था.
वो खाली वायर अनप्लग कर देता था आउटलेट में से और पैकअप करके चला जाता था। उस टाइम प्रोजेक्टर भी गर्म होता है, you should not contain that heat actually and pack it up, you should keep it out ताकि वो हीट सारी निकल जाए, डिसिपेट हो जाए। पर ये बंदा ऐसे नहीं करता था, ये दीवार से अनप्लग कर देता था और उठा के पैक करके निकल जाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो गर्माहट की वजह से, हीट की वजह से उसका जो बल्ब है वो खराब होने लग गया। And at that point the projector went bad, and as I said, it's probably not worth it repairing it. They're talking about the same thing, कि उसको रिपेयर करना is not worth it in certain areas. So he probably ended up throwing out. They're talking about the same thing, not allowed to remove heat. Make sure कि आप properly उसको shut down करें। अगर आपको अनप्लग करना है तो you have to properly shut it down first, then unplug the cable, and even then उस प्रोजेक्टर को आप किसी चीज में कंटेन नहीं करते हैं। कंटेन से मुराद किसी बैग में पैक करके उसको नहीं रखें, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखें ताकि उसकी हीट जो है उसके अंदर से डिसिपेट हो जाए, उसमें से निकल जाए, otherwise it will damage your item, your projector. Adjusting display settings. Although almost monitors are automatically detected by the operating system and configured for the best quality that they and the graphics adapter support, sometimes manually changing display settings such as for the monitor when adding new displays necessary. Okay. मोस्ट नए मॉनिटर्स जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। आप उसको कनेक्ट करें एंड उसके अंदर इवन बटन दिया हुआ होता है, जस्ट क्लिक ऑन ऑटो बटन और वो ऑटोमेटिकली उसकी साइज, रिफ्रेश रेट, फ्रेम, रेजोल्यूशन सब वो खुद ही कर देता है। बट काफी मॉनिटर के अंदर वो ऑप्शन भी होता है, यू कैन मैन्युअली चेंज द रिफ्रेश रेट एंड थिंग्स लाइक दैट। यूजुअली नो वन चेंज द रिफ्रेश रेट इन द मॉनिटर, पर जो गेमर्स होते हैं दे स्पेसिफिकली गेट a higher refresh rate monitors, 240 and above 500 kb जो refresh rate के monitors आते हैं, and they can manually change it. So the refresh rate is technically the vertical scan frequency, and it specifies how many times in 1 second the image on the screen can be completely redrawn if necessary. रिफ्रेश रेट जो है वो वर्टिकल स्कैन होता है, वर्टिकल स्कैन फ्रीक्वेंसी होता है, एंड इट बेसिकली इसका जो होल पर्पस है रिफ्रेश रेट का कि 1 सेकेंड के अंदर वो जो इमेज आ रहा है स्क्रीन के ऊपर वो कितनी बार उसको रिफ्रेश करे, मतलब एक इमेज को निकाल के दूसरा इमेज लाए अगर वो इमेज आपने चेंज किया है तो। अगर जैसे मूवी चल रही है, मूवी के अंदर इमेजेस बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बहुत जल्दी चेंज होते हैं, स्पेशली कोई फाइटिंग का सीन आएगा या कोई ड्राइविंग का सीन आएगा जिसके अंदर वो मूवी बहुत तेज चल रही होती है, उसके अंदर ये रिफ्रेश रेट कम्स रियली हैंडी। हायर द रिफ्रेश रेट द बेटर पिक्चर क्वालिटी यू विल सी। मैंने इससे पिक्चर क्वालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्राइटनेस, मैं ब्राइटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वो कितना जल्दी स्क्रीन रिफ्रेश होगी ताकि आपको उसके अंदर वो पिक्सल्स ना दिखें। कभी कभी है ना वो स्क्वायर 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 दिखेंगे टीवी के अंदर, रिफ्रेश रेट अगर अच्छा होगा वो नहीं दिखेंगे आपको। पर अगेन उसके लिए आपकी केबल भी अच्छी होनी चाहिए। केबल आप सस्ती, आप पुरानी एनालॉग जैसी यूज कर रहे हैं अगर और हायर रिफ्रेश रेट का मॉनिटर यूज कर रहे हैं, इट्स गोना बॉटलनेक योर रिफ्रेश रेट एनीवे, तो क्वालिटी वैसे भी ड्रॉप हो जाएगी केबल की वजह से। Measured in screen draws per second or the hertz, the refresh rate indicates how much effort is being put into checking for updates. And okay, I just said that. So for LCD televisions, the refresh rate is generally fixed and not an adjustment to be made. LCD televisions that support 120 hertz refresh rates are common, but it's easy to find those rated 60 hertz and 240 hertz and 480 hertz as well. So mostly gamers I have seen they use 240 and 480 hertz. इसके रिफ्रेश रेट काफी अच्छे होते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि एलसीडी के अंदर रिफ्रेश रेट जो है वो फिक्स्ड होते हैं, बट आई हैव सीन एलसीडीज जहां पे आप रिफ्रेश रेट को चेंज भी कर सकते हैं। दोज आर लिटिल मोर एक्सपेंसिव, आप रिफ्रेश रेट को 240 से 480 भी कर सकते हैं, बट अगेन दोज आर एक्सपेंसिव टीवीज। So for computer monitors, you might be able to select among multiple refreshers because you are in control of the circuitry driving the refresh rate, the graphics adapter. कंप्यूटर के अंदर आप रिफ्रेश रेट चेंज कर सकते हैं बिकॉज की जो वीडियो निकल रही होती है जो वो ग्राफिक एडेप्टर से आती है, और ग्राफिक एडेप्टर्स के एडेप्टर डिपेंडिंग ऑन कितना अच्छा ग्राफिक एडेप्टर है आपका, आप उस हिसाब से रिफ्रेश रेट चेंज कर सकते हैं।
However, because LCDs do not illuminate phosphorus, there is no concern of pixel decay, for which refreshing the pixel is necessary. Instead, higher refresh rate translates to more fluid video motion. जैसे मैं बोला, high refresh rate is equal to fluid video motion. मतलब वो उसके अंदर boxes या buffering type situation आपको नहीं दिखेगी. Think of the refresh rate as how often a check is made to see if each pixel has been altered by the source. If a pixel should change before the next refresh, the monitor is unable to display the change. ये same ही है. जितना जल्दी refresh होगा, इतनी जल्दी आपको और इतनी अच्छी आपको fluent वो पिक्चर दिखेगी. नहीं तो आपको दिखेगी वो पिक्चर हाथ चल रहा है, स्लो मूव हो रहा है, and you'll probably see some boxes and things like that. Okay. The refresh rate is selected for the monitor. Nevertheless, the refresh rate you select must be supported by both your graphic adapter and your monitor, because the adapter drives the monitor. If a monitor supports only one refresh rate, it does not matter how many different. Okay, same thing as I said. आपने लगाया है कंप्यूटर के अंदर $1,000 का graphics adapter card, which is pretty good. आपको काफी अच्छी refresh rate देगा, काफी अच्छी memory देगा, काफी अच्छा processor देगा. And let's say वो refresh card is able to handle 480 Hz of refresh rate. लेकिन आपका जो TV है can only handle 60 Hz of refresh rate. Well, आप graphics card को भी change कर देंगे highest refresh rate में. It's not really gonna do anything on the monitor, because monitor is limited to 60 Hz. तो दोनों चीज you need if you are using a computer for the refresh rate. अगर आप खाली TV use कर रहे हैं कुछ देखने के लिए, तो जो टीवी के अंदर जो रिफ्रेश रेट है, ओनली दैट विल कम इन प्ले. ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो बता रहे हैं टू प्रोसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रिफ्रेश रेट इन विंडोज 7. विंडोज 7 का बता रहे हैं, हम लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं. लेट्स सी इफ आई कैन जस्ट शो यू रियल क्विक. Alright, so screen resolution, they're saying go to screen resolution, then go to advanced settings. So let's do that. Right click on the desktop. The screen resolution nahi hai, so we can go to display settings, I believe, and hertz. Okay, advanced display settings, there we go. And yeah, refresh rate. इसमें कुछ नहीं है दूसरा, खाली एक ही refresh rate है. That's because I'm using a laptop. इसके अंदर कोई additional graphics card नहीं लगा हुआ है. But आपको अपना चेक करना हो, so once again you come onto the desktop, right click, click on display settings. ये Windows 10 की है, Windows 10 के steps हैं. Scroll down, come to advanced display settings पे जाएंगे, then you will see a refresh rate right here. Drop down करेंगे, शायद आपके पास extra options दिखेंगे, मेरे पास नहीं है because मैं laptop यूज कर रहा हूँ. Okay. ये जो आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं, ये बेसिकली मॉनिटर की है. मे बी वी कैन टेक, मेरा इसमें मॉनिटर नहीं है, सो इट्स नॉट गोना शो अस दैट, सो वी विल पास दैट. ओके, रिफ्रेश रेट, ये जिसके अब लैपटॉप के अंदर जो बिल्ट इन मॉनिटर होते हैं, सो आई कैन नॉट चेंज इट. बट अगर आपका अलग से मॉनिटर है, आप यू कैन गो हियर एंड दिस इज योर मॉनिटर frequency change if you want to change that and try that out. Frame rate. When you are reviewing video content, the refresh rate that you choose must be compatible or be made compatible with the frame rate at which the content was originally recorded or filmed. The frame rate is the measure of how many unique screens of content were recorded per second. If the playback of the content is not at the same rate, there will be a negative impact on the output if the difference rate is okay. For example, ये वाली जो एग्जांपल है यूजुअली देखने के अंदर ज़्यादा बेहतर रहती है, पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. अब आप समझें कि आपने कोई पुराने ज़माने की वीडियो, हम पुराने ज़माने की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब अच्छे कैमरेज आ गए and they record it up to 240 frames per second, especially in GoPro.
पर लेट्स से ये जो 30 फ्रेम्स इज एक्चुअली ओके फॉर ह्यूमन आई, बट लेट्स से हमने कोई वीडियो है जो 2 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर किसी ने रिकॉर्ड की है, पुराने जमाने की कोई वीडियो है, फिल्म, मूवी, 2 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर रिकॉर्ड की है. आई डोंट थिंक दैट ऐसे होता है, किसी ने की होगी, बट लेट्स अस्यूम. तो 2 फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब ये है कि एवरी सेकंड के अंदर 2 इमेज आपको दिखेंगे. एवरी सेकंड के अंदर 2 इमेज दिखेंगे. एवरी सेकंड में 2 इमेज 2 इमेज 2 इमेज करके वो पूरी ऐसे मूवी बनेगी. और जब आप उस मूवी को एवरी सेकंड उसको इमेज आप उसका चेंज करेंगे, एक इमेज से दूसरे इमेज में जाएंगे, तो वो जो बंदा जो पिक्चर के अंदर तो बंदा खड़ा हुआ होगा या गाड़ी खड़ी हुई होगी, पर जैसे 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 आप फ्रेम्स को आगे आगे जाएंगे आपको ऐसे लगेगा कि गाड़ी चल रही है या बंदा चल रहा है. ये फ्रेम्स रेट are considered in that way. Okay. अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके जो फ्रेम रेट्स हैं पुरानी कोई जैसे बोल रहे हैं ओरिजिनल रिकॉर्डेड और फिल्म, ठीक है ना, 2 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर आपकी फिल्म है, पर आपने मॉनिटर को सेट किया हुआ है 60 हर्ट्ज या 70 हर्ट्ज और जो भी हाई हर्ट्ज पे किया हुआ है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा. अनलेस मूवी भी जो है वो काफी अच्छे फ्रेम्स के ऊपर रिकॉर्डेड हुई हुई हो और आपके जो मॉनिटर का जो हर्ट्ज है वो भी इक्वल टू और या मोर देन दैट. यूजुअली इक्वल टू इज द बेस्ट वे. अगर सेम फ्रेम रेट एंड सेम हर्ट्ज है आपको क्वालिटी अच्छी दिखेगी. अब जहां यहाँ पे लोग सेम एग्जांपल दे रहे हैं कि कंटेंट रिकॉर्डिंग एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड and played at 60 hertz will look fine, right? Because as I said, it's very close. But अगर मैं इस 30 को 2 frames per second कर दूंगा, you're not going to be able to see it properly. Because exactly 2 copies of each frame can be displayed in the second it takes to redraw this screen 60 times. However, if the content were shot at 24 per second, इन्होंने खाली 6 frames per second कम किए, the most popular film recording rate, it would play back poorly at 60 hertz. The recording would first need to be converted to 30 frames per second, which happens to be NTSC standard, which is NTSC is in American standard. PAL is usually used in Asian countries, Japan, and I think all those other countries. 30 frames per second जो है is considered NTSC standard. 25 frames per second is considered PAL standard. So by process known as 3:2 pull down, which creates 10 frames out of 4 and then plays them in 1 second. Although there are 60 frames being played in that 1 second, only 30 of them are unique. The other 30 are duplicates of those. Because frame rates only counts unique frames, this 60 Hz signal gets credit for 30 frames per second, just like the content that was recorded at that rate. In other words, refresh rate is a count of the screen of information displayed per second. Even if each this screen is duplicated, while frame rate is the measure of unique. Okay. Now, let me see if I can give you some example on that real quick, because I feel like लोगों को समझ आया होगा कि नहीं. 2 frames per second video. See if कोई ऐसा वीडियो है. If you're going, मैं बेसिकली आपको लो फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ. हाँ, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं आ रही है. होपफुली कुछ मूवमेंट ये शो करें. हाँ, देखें, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. देख रहे हैं आप, वीडियो अटक अटक के चल रही होगी. ये जो वीडियो अटक अटक के चल रही है ना, दैट मीन्स ये लेस फ्रेम्स पर सेकंड है. लेकिन देखिए वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, वीडियो इज क्रिस्प, ठीक है ना. ये जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी है. ये यूजुअली इट्स कॉल्ड अंडर इन द मेगाबिट्स पर सेकंड की रेटिंग में आता है.
द इमेज साइज रेजोल्यूशन, एक्चुअली वो हम आगे भी कवर करेंगे। वो रेजोल्यूशन इसका बहुत अच्छा है क्योंकि आप बहुत क्लियर देख सकते हैं। पर देखिए वीडियो अटक अटक के चल रही है, गाड़ी आपको सिर्फ एक बार दिखी, हालांकि गाड़ी आपको कंटिन्यूसली वहां से आते हुए और यहां से जाते हुए दिखनी चाहिए, पर गाड़ी आपको सिर्फ एक या दो बार दिखी। तो दैट टेल्स यू दैट दिस फ्रेम्स पर सेकंड इज टेरिबल। ये जिस बंदे ने भी रिकॉर्ड की है, इसने जानबूझ के 2 फ्रेम्स पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड की है टू शो कि व्हाट इज 2 फ्रेम्स पर सेकंड। अब कॉन्सेप्ट यही है, अगर इसी को 30 फ्रेम्स पर सेकंड में हम देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत फ्लुएंट दिखेगी, ठीक है ना। तो जब हम वीडियो देखते हैं उसके अंदर काफी चीजें कम टुगेदर, फ्रेम्स पर सेकंड, रेजोल्यूशन, हर्ट्ज, द रिफ्रेश रेट, ये सब कंबाइन होके फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो दिखती है। सो दैट्स व्हाट दे मीन बाय द फ्रेम रेट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड FPS, फ्रेम रेट पर सेकंड। ओके, रेजोल्यूशन जैसे अभी मैंने बताया, so resolution is defined by how many software picture elements, which is pixels, are used to draw the screen. An advantage of high resolution is that more information can be displayed in the same screen area. A disadvantage is that the same object and text displayed at a high resolution appear smaller and might be harder to see. Up to a point, the added crispness of high resolution display on high quality monitor compensates the negative. इसका मैं बताता हूँ आपको। The resolution described in terms of the visible image dimension which indicates how many rows, blah blah blah. Okay, ये इसको मैं आपको quickly बताता हूँ। ये basically this is not a big deal actually. मैं आपको बताता हूँ, देखिए। Let's see अगर मुझे ये कुछ डाउनलोड करने देता है कि नहीं। I'm gonna save this image. Hopefully it will save under नहीं, ये 4K में नहीं डाउनलोड हुई है ये, पर मैं इधर से आपको समझाता हूँ। जो हाई, कभी कभी क्या होता है, जो हाई रेजोल्यूशन जो पिक्चर होती है ना, उसके अंदर आप देखेंगे कि वो बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर होती है। इसके अंदर मैंने पिक्चर जानबूझ के छोटी की है अभी, ताकि मैं खाली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बट वो चीज सेम नहीं है यहाँ पे, जस्ट टू क्लैरिफाई। जैसे अभी छोटा सा डॉट देख रहे हैं यहाँ पे, मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा हो, ये छोटा सा डॉट है, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। हाई रेजोल्यूशन के अंदर जो क्या होता है कि पिक्चर्स जो हैं छोटे मॉनिटर के अंदर, छोटे मॉनिटर की बात कर रहे हैं, अगर रेजोल्यूशन होगी उसकी 4K की रेजोल्यूशन, बट वो पिक्चर बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाती है, बहुत ही स्क्रम्बल हो जाती है, और कभी कभी आपको क्लियरली नहीं दिखेगी वो हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर छोटे मॉनिटर में। हत्ता कि आप या तो बड़ा मॉनिटर यूज करें या तो फिर आप जूम करें। अब देखिए मैं जूम कर रहा हूं तो इसके पिक्सल्स खराब हो रहे हैं, इसके पिक्सल्स खराब हो रहे हैं। जैसे छोटे छोटे देखिए मुझे यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस मुझे दिख रहे हैं बिकॉज ये 4K इमेज डाउनलोड नहीं हुई है। बट मैं कॉन्सेप्ट समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं वो 4K इमेज को जब मैं जूम करूं तो ये जो छोटा सा जो ये डॉट है ना, मुझे बहुत क्लियरली दिखना चाहिए। इस सिनेरियो में नहीं दिख रहा है बिकॉज दिस इज नॉट अ 4K पिक्चर, बट द आइडिया हियर इज दैट छोटे मॉनिटर के अंदर हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर बहुत ही कंप्रेस्ड होके दिखेगी, तो वो कभी आपको छोटी छोटी चीजें क्लियरली नहीं दिखेगी अनलेस आप उसको जूम करें। यहाँ पे ये लोग वही बता रहे हैं बेसिकली। अलग अलग डायमेंशंस हैं। रेजोल्यूशन ऑफ 1024 768 means 1024 pixels across columns and 768 pixels down rows were used to draw pixels. ये अलग अलग पिक्सल्स आपको दिखेंगे, commonly known as right here when you go to a display settings you will see, आपको इधर दिखेगा, देखिए ये जो रेजोल्यूशन दिख रहा है आपको 1366 by 768
1368 ये बोल रहा है कि कॉलम्स है आपके इन माय केस अक्रॉस कॉलम्स और रोज, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं व्हाटएवर, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको पिक्चर दिखेगी. हायर द रेजोल्यूशन the more compressed the picture is going to be in smaller monitor. And उसका flip side ये है, higher the resolution the clear it's gonna be visible on a bigger monitor. क्योंकि अगर आपके रेजोल्यूशन ये होंगे छोटे, जैसे कि सॉरी ये नहीं है, अगर मैं अपने रेजोल्यूशन इसमें चेंज नहीं करूंगा, बट जस्ट बताने के पर्पज से अगर मैं ये रेजोल्यूशन कर दूंगा ना तो सारी चीजें बहुत बड़ी हो जाएगी. आप देख रहे हैं, मैं इसको देखिए ऑप्टिमल नहीं है, देखा साइड में से स्क्रीन कट गई और ये काफी चीजें बड़ी हो गई, बिकॉज दे मॉनिटर के हिसाब से ये पिक्सल्स छोटे हैं. ये मॉनिटर के अंदर रेकमेंडेड पिक्सल्स ये है ताकि सारी चीजें मुझे क्लियरली इस मॉनिटर के अंदर फिट होके दिखे. दैट्स द होल पर्पस ऑफ रेजोल्यूशन. आगे जाके रेजोल्यूशन वी विल कवर लिटिल बिट मोर. ये देखिए ये भी छोटा हो गया. These are software and hardware resolution. Setting the resolution for your monitor is fairly straightforward. If you are using an LCD, ये सब मैंने आपको अभी बता दिया, और ये वो लोग बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मैंने अभी बताया आपको. Windows 7 के अंदर ऐसे थी, ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते थे, अभी Windows 10 में उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है. Same thing I just showed you. Multiple displays. Whether regularly or just occasionally, you may find yourself in a position where you need to use two monitors on the same computer simultaneously. For example, if you're giving a presentation and would like to have two monitors attached, right? Whatever. चलिए इसको मैं आपको क्विकली इसको बताता हूँ. बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए भाई, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है डुअल मॉनिटर डिस्प्ले या मल्टी डिस्प्ले यूज करने की. अब जैसे लैपटॉप है, कुछ लैपटॉप के अंदर VGA कार्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, नहीं VGA कार्ड नहीं, सॉरी VGA पोर्ट. लैपटॉप के अंदर कभी कभी हाँ ये ऐसा पोर्ट दिया हुआ होता है, ठीक है, ये पोर्ट होता है. और लैपटॉप के अंदर HDMI पोर्ट भी होता है. ये कन्वर्टर दिया है इन्होंने कि तो कन्वर्टर है, कन्वर्टर वी लुकिंग फॉर ये रहा. देखिए ये बेस्ट एग्जांपल है. ये लैपटॉप है, इसके अंदर इन्होंने VGA भी दिया हुआ है और HDMI भी दिया हुआ है, which means I can run 2 extra monitors apart from my laptop monitor. तो मेरा लैपटॉप का एक मॉनिटर है, that's one display. मैं HDMI के अंदर एक और वायर कनेक्ट करके किसी टीवी में या किसी में लगा सकता हूँ, that's a second monitor. और मैं एक और वायर VGA का वायर किसी थर्ड मॉनिटर में लगा सकता हूँ, which becomes the third monitor. Excuse me. पर ये लोग उसकी भी बात कर रहे हैं, ये तो लैपटॉप की मैंने बात कर ली. डेस्कटॉप के अंदर हम कैसे करेंगे? तो काफी मॉनिटर, और ये हमें चैप्टर 3 के अंदर कवर किया था. काफी लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन आते हैं, वो मैंने पहले दिखाया हुआ था. मदरबोर्ड के अंदर जो बिल्ट इन आता है उसके अंदर यूजुअली एक या दो होते हैं, एक DVI होता है और एक VGA होता है, या किसी में सिर्फ VGA होता है, या किसी में HDMI भी होता है. बट वॉट एवर द केस में भी, अगर वो आपके डेस्कटॉप में नहीं है, देन यू कैन पुट वन ऑफ दीज कार्ड्स. जैसे कि मुझे चूज करना है, आई डोंट वांट, इसमें दोनों VGA है, आई वांट चूज दिस वन राइट हियर, दिस इज अ गुड कार्ड. सही ना, इसमें 3 कनेक्शन दिए हुए हैं, ये है VGA, ये है HDMI और ये है DVI. ये अगर आपके डेस्कटॉप के अंदर सिर्फ एक ही VGA का आउटपुट दिया हुआ है या DVI का आउटपुट दिया है, जो भी आउटपुट दिया है, if you need multiple computers you can add this VGA adapter, और उसके साथ फिर आप 3-4 मॉनिटर जितने भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं, और बस कार्ड लगाते जाएं और वो ऐड करते जाएं. आप you can extend as much as I think the Windows can accept it. So ये अपना हो गया मल्टीपल डिस्प्लेस.
ये बता रहे हैं कि मल्टीपल डिस्प्ले चेंज कैसे होता है। मेरे पास आज मल्टीपल डिस्प्ले नहीं है, बट मैं आपको क्विकली बताता हूँ। लेट्स अज्यूम दैट सेकंड मॉनिटर आपने कनेक्ट कर दिया है। What you're gonna do is you're gonna go to on your desktop somewhere, right click to display settings, और ये जो मल्टीपल डिस्प्ले जो है ना, ये लाइट हो यहाँ पे आ जाती है। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा ऐसा ही कुछ, और वहां पे लिखा हुआ होगा डुप्लीकेट डिस्प्लेस और एक्सटेंड डिस्प्लेस और लैंडस्केप डिस्प्ले, तो ऐसा आएगा। ऐसे 3-4 ऑप्शन आते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट करना है, सब मॉनिटर में सेम इंफॉर्मेशन डाल दिया, तो डुप्लीकेट आप सेलेक्ट करें एंड देन यू अप्लाई। लेट्स सी इफ दे हैव प्रोवाइडेड दैट हियर। देखिए मल्टीपल डिस्प्लेस, शो डेस्कटॉप ओनली ऑन वन। ये ड्रॉप डाउन के अंदर देखें एक्सटेंड दीज डिस्प्लेस अगर आप करेंगे तो 5-6 जितने भी मॉनिटर होंगे वो सब अलग अलग चीजें डिस्प्ले करेंगी। अगर डुप्लीकेट करेंगे सो इट्स गोना डुप्लीकेट जो आप मॉनिटर नंबर 1 पे शो करेंगे वो ही बाकी सब मॉनिटर में करेंगे। एक्सक्यूज मी। और बाकी का ऑप्शन इट्स बेसिकली व्हाट इट सेज, शोज डेस्कटॉप ओनली ऑन 1 और 2। तो डेस्कटॉप खाली एक ही मॉनिटर पे शो करेगा, सब पे नहीं करेगा। सो यू कैन ट्राई दैट आउट ऑन योर ओन। It will ask you to keep the change or revert back. Marzi aapki, if you want to try that, you can do that. But as soon as you plug in 2 monitors, you'll be able to change these settings. Understanding video standards and technology. The following sections introduce the various video standards from, I believe they would probably be talking about, okay, they're talking about VGA. I thought they would be talking about NTSC, but okay. Chalo, theek hai. Video standards. The early video standards differ in 2 major areas: the highest resolution supported and the maximum number of colors in their palette. The supported resolution and palette size are directly related to the amount of memory on the adapter, which is used to hold the rendered image to be displayed. Display adapters through the year can be divided into 5 primary groups: monochrome, CGA, EGA, VGA. DVI. VGA, DVI, HDMI are still common. These are not as much common anymore. Monochrome and stuff, but I have seen these used in older technologies still. ये लोग भी बता रहे हैं हमने पेरिफेरल एंड एक्सपेंशन के अंदर ये DVI और HDMI कवर कर चुके हैं। हमने ये भी कवर किया था। ये लोग मेमोरी की बात कर रहे हैं कि क्विकली मैं अगर ये पिक्चर खुली हुई हो, ये जो कार्ड है ये VGA कार्ड है। ये हीट सिंक है, हमने कवर किया। हीट सिंक के नीचे एक लगा हुआ है प्रोसेसर, और well you can call it a processor or a chip. इस कार्ड्स के अंदर बिल्ट इन मेमोरी होती है। अब ये तो बहुत छोटा सा कार्ड है, ऐसे बड़े बड़े कार्ड्स आते हैं। उसके अंदर खुद के पंखे लगे होते हैं, उनकी खुद की मेमोरी होती है। बेसिकली वो मेमोरी जो है ना वो स्टोर होती है यहाँ ये भी राइट वन, उसमें मेमोरी स्टोर होती है टू डिस्प्ले द नेक्स्ट वीडियो ऑन द मॉनिटर। तो they are talking about that here. ये हमने चैप्टर 3 के अंदर ये कवर कर चुके हैं। Newer systems based on VGA analog technology connectivity were eventually developed using adapters with extendable memory or separate price model with differing fixed memory. Adapters featuring variable amount of memory result in selectable resolutions and color palettes. In time 24-bit. ये पुराना शो है, ये का नहीं है। मुझे याद है आई थिंक विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000 में शायद पुराने जो कलर्स उसके 24 बिट के भी शो करते थे। आई थिंक अब 32 बिट के भी आ गए हैं फॉर द ट्रू कलर, बट आई डोंट बिलीव वी सी दिस एनीमोर, बट आई विल डबल चेक। मेरे लैपटॉप के अंदर शायद शो नहीं करेगा, ये डेस्कटॉप के अंदर होगा। सो वी विल सी इफ दे शो यू ए पिक्चर। ऑलराइट, हम थोड़ा सा कवर करते हैं इसको क्विकली, इवन दो दिस टेक्नोलॉजी इज not really used anymore. The first video technology for PC was monochrome. सबसे पहले ये आई थी, a Latin word mono से meaning one and chroma mean color, so monochrome one color basically. This black and white video थी
Actually, it was green or amber text on a black background. Was fine for the ये usually black and white monitors होते थे. ये DOS के अंदर आपको अपने बहुत देखे होंगे. IBM ने उसको पहले use किया था. They developed this. उसके pixels resolutions were pretty small also. Back in the days, I remember जब हम DOS या Q basic या GW basics type चीज use करते थे languages, you would see it would all run on monochrome. Black and white screen होती थी. You would not be able to change many colors on that. फिर HGC आया जो Hercules कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वालों ने इंट्रोड्यूस किया. उसके भी रेजोल्यूशन सेम थे, बट इट कुड डिस्प्ले ग्राफिक्स कलर एंड टेक्स्ट. ये अगेन Q बेसिक GW बेसिक आप चेक करेंगे, उसके अंदर हम जाके कलर्स चेंज कर सकते थे. बहुत बड़ी चीज थी बैक इन द डेज. नाउ इट्स नॉट अ बिग डील. CGA, the next logical step for display was to add a splash of color. IBM was the first with color, with the introduction of color graphics. Okay, 16 color tags, resolution is 640, 280 columns. IBM ने first color technology introduce की थी display के अंदर. They call this CGA. I really don't want to go over it as much because these are hardly used. We will just cover. EG is also not, I mean, hold on. So after a time, people wanted more colors and higher resolution, so IBM responded with the enhanced graphic adapter. EGA could display 16 colors. Same thing. It was a little bit better, but then came VGA. We're gonna go with the VGA and see if the HDMI is not covered here, but okay. With the PS2 line of computers, IBM wanted to answer the cry for more resolution, more colors by introducing its best color video adapter to date, VGA. This video technology had whopping 256 KB of memory on board and could display 16 colors as 640 by 480 and these pixels, or using 13 channel of VGA BIOS 256. Okay, what they're talking about here, but yeah, maybe ये still पुरानी है, but still used. Okay, जो मदरबोर्ड के अंदर जो VGA आते हैं पुराने ज़माने के अंदर क्या होता था कि VGA के कार्ड जो लग के आते थे उसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी होती थी 256. मदरबोर्ड के अंदर जाके आप उसको है ना रेज कर सकते थे ऑल्सो. बैक इन द डेज आई थिंक वाज 2 MB या 1 MB तक. तो वो मदरबोर्ड से मेमोरी को पुल करके आपको थोड़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी शो करता था, पर मदरबोर्ड आपका प्रोसेसर और मेमोरी आपकी डाउन शो करती थी, लेस शो करती थी. तो VGA जब IBM वालों ने इंट्रोड्यूस किया, they were able to use up to 256 color at this pixel. वो काफी became widely used. They enjoyed a long reign, काफी time तक use किया, but then after that, obviously HDMI and DVI आ गया, so then the onboard old VGA built-in chips got out, and then the new one came in where उनकी onboard memory लगी हुई होती थी VGA कार्ड की, और वो लोग बाय कर लेते थे adapter कार्ड, जो मैंने भी आपको शो किया पिछली वीडियो पिछले इसके अंदर. this one right here, ये रहा, ठीक है ना. So these are mostly outdated, but just remember VGA, DVI E, DVI D, and HDMI. Okay, we will pass that. Advanced video resolution concept. The following display technology included hardware consideration, resolution adjustment could be made to change configuration. ये मैंने आपको अभी बताया, basically resolution जो हमने change करते हैं ये उसके बारे में बात कर रहा है. The following section details what might at first appear to be technologies built on new graphic adapters. However, advancement after the VGA adapter occur only in the memory and firmware of the adapter, not the connector or its fundamental analog functionality. As a result, the following technologies are distinguished early on by support resolutions and color palettes, and later by resolution alone. Okay, I feel this is really irrelevant here. Super VGA until NAD's Super VGA VESA. So थोड़ा सा cover कर लेते हैं Super VGA. So until 1980, IBM set most personal computer video standards, right? IBM ही कर रहा था सारे जो IBM was very famous back then, not anymore so much, but they came up with the Super VGA. So IBM made the adapters, everyone bought them, and they became standard. Sub use कर रहे थे. Some manufacturers didn't like this monopoly
and set up the Video Electronic Standard Association. तो उन्होंने एक association वैसा, it's commonly known for a lot of things, especially TV के अंदर भी ये वैसा आप terms आप काफ़ी use करेंगे, जो Video Electronic Standard Association है, to try to enhance IBM's video technology and make the enhanced technology an open standard. The initial result of this work was Super VGA, SVGA. This new standard was indeed an enhancement because it could support 16 color at a resolution of 800 by 600. But it soon expanded to 1080p, basically key pixels आगे 256 के अंदर. Since then, SVGA has been a term used loosely for any resolution and color palette to exceed the standard of VGA. This even includes the resolution XGA. New names still continue to be introduced mainly as a marketing tool to tout the new resolution DJAR, while display devices must be manufactured to support. Okay, these are really irrelevant here. Anyway, मैं quickly बताता हूँ, बस ये वैसा वाले IBM की मोनोपोली चल रही थी, तो वैसा वालों ने एक association create की to open standard the VGA market. They came up with a little bit better resolution, and वैसा अभी भी चल रहा है. Okay. Then IBM introduced 1990 known as the extended graphics array. This technology was available only as a micro-channel architecture expansion board versus ISA or EISA, for instance. XGA could support 256 at these pixels or 65,000 colors at this pixels. It was different design, optimized for GUIs of the day, such as Windows. ये पुराने Windows के अंदर Windows 2000 and below, I believe, had this. At that time, I think Windows 3.1 से start किया हुआ था इन्होंने, but I don't know if they tell you here. But yeah, technology is also very outdated. We don't really have to cover this as much. Or reason. Okay, we can skip this. Okay. हम आज की डेट के अंदर UHD 4K is also common, very common. XG is not that common, but ये यहाँ से जो basically start हो रहे हैं और जो ख़त्म हो रहे हैं, ये these are pretty somewhat of a common. I mean, obviously 4K सबने सुना हुआ उसके बारे में. Specifications. Nobody uses lower than these resolutions these days anyway, unless you're using a very old computer. So starting with SXGA, the more advanced resolution can be paired with 32-bit graphics, which specifies a 24-bit true color palette. You can bypass this. Non-adjustable characters. The following section discusses native resolution. So one of the peculiarities of LCD, plasma, and OLED and other flat panel displays is that they have a single fixed resolution, known as the native resolution. Unlike CRT monitors, which can display a crisp image at many resolutions within a supported range, flat panel monitors have trouble displaying most resolution than the native. The native resolution comes from the placement of the transistor. That doesn't seem right. For a native resolution of 18, for example, transistors, LCD arranged in grid. We just covered all this upstairs above. Basically, it's just talking about that LCDs has this many transistors depending on what size you have. They are arranged in a grid array, 1680 columns and 1050 rows, trying to display resolution at this resolution. Higher the transistor, the better the display. हमने ऊपर ऐसे ही learn किया है अभी. OLED TVs के अंदर जितना बड़ा TV उसके अंदर higher transistors, higher resolutions, and the better backlight. That's what they're talking about. जितने ज़्यादा transistors होंगे, एक transistor emitting light on the pixel, you're gonna get a better picture. Contrast ratio. The contrast ratio is the measure of the ratio of the luminance
of the brightest color to that of the darkest color that the screen is capable of producing. Contrast ratio basically हम मॉनिटर पे काफ़ी टाइम बहुत टाइम हम सेट करते हैं. प्रोजेक्टर के अंदर भी कॉन्ट्रास्ट हम सेट कर सकते हैं. उसके अंदर जो डार्क और ब्राइटनेस का जो रेशियो होता है, कितना डार्क होना चाहिए, कितना सफ़ेद होना चाहिए या ब्राइट होना चाहिए, उसके मीडियम तक पहुंचने के लिए हम one of the original problems with LCD display and a continuing problem with cheaper versions is that they have low contrast ratio. Only LED backlit LCD panels rival the high contrast ratio that plasma display have always demonstrated. जैसे मैंने अभी बताया, contrast to brightness है वो पुराने LCD especially fluorescent वाले जो LCD जो cheaper version थे उसका contrast ratio बहुत ही बकवास था. LED वाले जो LCD backlit है उसका pretty good है. They are comparable to the plasma TV, but again मैंने बताया था plasma TV के drawbacks क्या हैं. A display with a low contrast ratio won't show a true black very well, and the other colors will look washed out. Again kind of dull दिखेगा आपको, जिसका contrast अच्छा नहीं होगा वो dull दिखेगा. Higher the contrast ratio, the better the video would be. Also, lower contrast ratio means that you will have a hard time viewing images. As I mentioned, जितना higher contrast ratio होगा उतनी अच्छी picture quality होगी. Ratio of smaller LCD monitors in television typically start out at 500 to 1. Common ratios for larger units range from 20,000 to 1 to 100,000 to 1. In the early days of monitors that used LEDs as backlights, 1 million to 1 was exceedingly common. Today, vendors advertise 10 million to 1 and infinite as contrast ratio. Anything higher than 32,000 is likely a dynamic contrast ratio. Plasma displays have always been expected to have contrast ratio of around 5,000 to 1 or better. आपके जो LED TVs आ गए उसके अंदर contrast ratio 10 million to 1 या infinite contrast ratio की टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी viewing capabilities बहुत बढ़ गई है. Once considered a caveat, a dynamic ratio is realized by reducing power to the backlight for darker images. ये पहले ये लोग try कर रहे थे कि पीछे की dark light वो को reduce करके ये उम्मीद कर रहे थे कि they can have a better ratio. And it probably worked in the previous years, but not anymore. The downside was that the original backlight, being a single fluorescent bulb, meant that the signal of the brighter LCD pixels had to be amplified to compensate. तो वही मैं जो भी बताया, उस बैकलाइट को डिम करने की वजह से उनकी जो LCD की ब्राइटनेस है वो ब्राइट करनी पड़ती थी to have a better picture. This practice tends to wash out the lighter colors and make white seem like it's glowing, which is hardly useful to the users. Today's LED backlight, however, are controlled either in zones made of a small number of pixels or individually per pixel, resulting in trustworthy high dynamic contrast ratio. The environment where the monitor will be used must be taken into account when considering whether to place a lot of emphasis on contrast ratio. In darker areas, high contrast ratio. These things are, I feel this is in today's world this is very irrelevant, because अब के जो monitor आ रहे हैं they have pretty good contrast ratio. You can put them anywhere. Bright light के अंदर भी डाल के you can increase the brightness and you should be fine. Now obviously I'm not talking about sunlight के नीचे बैठ के आप देखो तो obviously वो नहीं दिखेगा, but in a room, office space और home के अंदर जो regular monitor है they behave pretty well. The contrast ratio का basically जो concept है वो is simple as that. Higher the contrast, the better the picture quality you're gonna get. अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने मोस्टली जो है डिस्प्लेज ही कवर किए हैं, काफ़ी हमने डिस्प्ले कवर किए हैं. We read about the display technologies and its settings. The primary categories of video display units, also called VDUs, were mentioned. We explained LCD के बारे में पढ़ा, OLED, plasma and projector. बाकी दूसरी सारी चीज़ें हमने छोड़ी हैं जो XGA, CGA and VGA का चैप्टर हमने थोड़ा छोड़ दिया because those are a little bit outdated. Concepts unique to each of these categories were explored. Additionally, the similarities among them were highlighted. We identified names and characteristics of display resolutions and explained the process of configuring
सेटिंग सच एज रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट के बारे में हमने पढ़ा, रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, मल्टी मॉनिटर के बारे के अंदर पढ़ा, एंड उसको विंडोज के अंदर कैसे सपोर्ट करते हैं। थोड़ी सी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी एंड टू शो। सो आज का जो लेक्चर था वो मोस्टली डिस्प्लेस के ऊपर ही था। ये एग्जाम्स if you want to do that on separately, I highly recommend that आप ये questions के through जाएं। मैं जिस वीडियो जो वीडियो है उसके अंदर मैं वो चैप्टर का लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, सो आप ये डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकेंगे अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट पहले से नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, लेट्स सी, जो कि होगा चैप्टर 5। उसके अंदर हम यही कस्टम पीसी कॉन्फ़िगरेशन, हम ग्राफिक्स कैड एंड कैम डिजाइन वर्क स्टेशन, मल्टी कोर प्रोसेसर कवर करेंगे, हाई एंड वीडियो, मैक्सिमम रैम कवर करेंगे, ऑडियो वीडियो एडिटिंग वर्क स्टेशन, स्पेशलाइज्ड ऑडियो वीडियो कार्ड। काफ़ी चीज़ें मैं एक्चुअली ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। थोड़ी मैं आपको प्रोसेसर के बारे में भी बताया था, मेमोरी के बारे में भी थोड़ा बताया, कार्ड के बारे में भी मैंने बता चुका हूँ, बट हम इसको थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगे। वर्चुअलाइजेशन वर्क स्टेशन, ये भी मैंने आपको बताया था, आई थिंक चैप्टर 1 के अंदर थोड़ी आई टच्ड ऑन दिस लिटिल बिट, बट वी विल होपफुली कवर दिस इन लिटिल बिट मोर डिटेल इन चैप्टर 5। ठीक है, गेमिंग पीसी, दिस इज होपफुली दिस इज गोना बी फन। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिख सकता है, मैं डालूंगा, वो रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर आएगा, इस लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं आएगा, रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर ऊपर आपको एक लिंक दिखेगा टॉप राइट पे, जो गेमिंग पीसी, हाउ टू बिल्ड ए गेमिंग पीसी फ्रॉम स्क्रैच, मैंने उसकी वीडियो बना चुका हूँ, आपको जब टाइम मिले आप देखें। उसके अंदर ये सारी चीजें यूज हुई है, प्रोसेसर, कूलिंग डिवाइस जो विद व्हाट केम विद इट एंड ऑल दैट। होम थिएटर पीसी के बारे में बात करेंगे, ये इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है, बट आई कैन शो यू दिस pretty well. I do have one home theater PC sitting at a place, so I can show you that. Standard thick client and thin client, I'm glad कि ये लोग इसकी बात कर रहे हैं। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से most companies are using this, so ये आपको हेल्प डेस्क और सिस्टम एडमिन की जॉब्स के अंदर बहुत हेल्प करेंगी। थिन क्लाइंट एंड स्टैंडर्ड थिन क्लाइंट एंड होम सर्वर पीसी, दिस इज गुड। घर के अंदर आपको पीसी सर्वर रन करना हो, ये लोग उसके बारे में भी कवर कर रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस चैप्टर 5। होपफुली वो टेक्निकल साइड के ऊपर जाएंगे, ज़्यादा थ्योरी ना हो, प्रैक्टिकल हो, तो हम उसको कवर कर सकें, एंड आई विल कवर ऑल ऑफ दिस इन चैप्टर 5। आवर नेक्स्ट सेशन की जो डेट है मैंने डाल दी है मेरे अपने अबाउट अस पेज के अंदर, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। द ओनली थिंग इज द लिंक जो है उसका विल बिकम लाइव on that day around 10:30 AM. तो कल, which is a Saturday, 9/17, 10:30 AM Eastern Time, New Jersey, USA time, हम chapter number 5 to 6 इंशाल्लाह। chapter 5 काफी लंबा लग रहा है, but अगर chapter 5 complete हो जाता है, then we will cover chapter 6 as well until 3 PM. Otherwise we will only conclude on chapter 5. यहाँ तक हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कंसर्न्स हो, कोई भी कमेंट्स हो, आप प्लीज़ कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, चैट में टाइप कर सकते हैं, और या तो आप नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू प्रेस दैट बेल आइकॉन, तो एनी नई वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग मैं ऑन करूँ, यू आर एबल टू गेट दोज नोटिफिकेशंस, सो देन आप वो वीडियो चेकआउट कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद चैप्टर